ಹಲೋ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯ ನಂತರ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾಲೋ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಆನ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ರೈತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. Two union territories are being involved in this regional conference. It is a great pleasure to welcome Shri Kailash Chaudhary, Honorable. I cordially welcome our Honorable Agriculture Minister Shri B.C. Patil sir to this conference of CBPOs and FPOs. Because of his utmost regard and huge respect to the farming community, he always uses the term Jai Kisan. Sir is a multifaceted personality. He is a farmer, he is a police officer, a cine actor and a politician. He has brought many innovative programs for the welfare of the farmers like My Crop, My Right, A Day with a Farmer, scholarship to farmer children and so on and so. On behalf of everyone, I extend a warm welcome to Honorable Minister. It is an honor to welcome Srimati Vijayalakshmi, Joint Secretary, Marketing and Policy, Department of Agriculture and Farm and Watershed Department, and all who have gathered here to this conference. Madam is playing an important role in establishing a sustainable FPO ecosystem in the country. I thank you, ma'am, for giving this opportunity to organize this conference in the city of Bangalore, a garden city. I welcome Shri Rajendra Kumar Kataria, Principal Secretary, Horticulture and Sericulture, Government of India, to this conference. Sir is a constant source of inspiration for all of us and is the guiding force in development of FPOs in the state. I welcome you, sir. I also welcome Mr. Srinivas, Director of Watershed, Nandini Kumari, Director of Agriculture, Padmaya Naik, who is the Director for Antargange, and Ashok Kalur, who is the Director for Center for Excellence, who are present in the function. I welcome all the representatives from Department of Marketing and Policy, all representatives from NPMA for gracing this occasion. I also welcome central and state government representatives, all the implementing agencies, CBOs, FPOs from Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Telangana, Kerala, Karnataka, Andaman and Nicobar, Puducherry, who have traveled all the way to attend this conference. I cordially welcome all the speakers for today's conference. I also welcome all the representatives of the farmers, all the elected representatives and media who are present here in this conference. I also thank and welcome our staff from Watershed Department, Agriculture and Horticulture Department for being here. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome to all of us here. On behalf of all of you, a very warm welcome to Dr. M.V. Venkatesh. Sir, tamgu atmiya suswagata eldru parvagi. Thank you very much. ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Request all the dignitaries on the dais to kindly light the lamp and wish this workshop of FPOs and CBBOs a very gainful learning.
दीपज्योतिजनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आहुति नमोऽस्तु ते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोऽस्तु ते। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನೌ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ Dr. Vijayalakshmi Ma'am, IAS and PhD, Joint Secretary, Marketing and Policy, Department of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India, for context setting. Welcome, Madam. Honorable Minister, Honorable MOS Agriculture, Shri Shobha Karandalaji ji, Honorable MOS Agriculture, Shri Kailash Chaudhary ji, Honorable Agriculture Minister, Karnataka Government, Shri B.C. Patil Avare, Shri Rajendra Kataria ji, Principal Secretary, Horticulture and Sericulture, Government of Karnataka, Shivayogi Kalsad Avare, Secretary Agriculture, Shri M.B. Venkatesh, Commissioner, Watershed Development Department, Shri B.Y. Srinivas, Director, Watershed Development Department, Government of Karnataka, and all other dignitaries who are present on the dais today, and all farmer friends from all 5 states from the southern region. Ellarigu namaskara, vanakkam, namaskaram, swagatam, suswagatam. ಈ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತಂ. ఆంధ్ర తెలంగాణ నుండి వచ్చిన రైతు బంధువులందరికీ, సిబిబిఓ ఆర్గనైజేషన్స్ నుండి వచ్చిన అందరి అఫీషియల్స్ అందరికీ, మన మిగిలిన అఫీషియల్స్ అందరికీ కూడా చాలా స్వాగతం, సుస్వాగతం ఈ కార్యక్రమానికి. తమిళనాడులరెందు వందరికం అனைத்து వ్యవసాయ పెరుమక్కలయం వరవేరకేరన్. ಕೇರಳ ತಿಲ್ನಿನ್ ಬಂದಿರಿಕನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಷಕ ಸುಹೃತಕಳಕಂ ಸ್ವಾಗತಂ. I am really excited today standing in front of you in this beautiful GKVK Agriculture Sciences University campus. The excitement is manifold. It's not only because this is the third in series of the regional conferences and the fourth overall conference on this very important issue of FPOs and CBBOs. But it is also today, there is a feeling that we are all together representing India. We have all languages here. Today, मंच पर हमारे साथ माननीय मंत्री जी राजस्थान से हैं, हिंदी भाषी हैं, मैडम कर्नाटका से हैं, वो है किसान को कैसे फ़ायदा पहुंचाना है, రైతన్నకి మనం ఎలా చేయాలి, రైతన్నని ఎలా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, వాళ్ళ పురోభివృద్ధికి ఎలా పాటుపడాలి,
దానికి FPO ఎలా మాధ్యమం అవుతుంది, FPOని ఒక మాధ్యమంగా చేసుకుని చిన్న సన్నకారు రైతులందరూ సమిష్టిగా కృషి చేస్తే ఎలా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు, వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎలా బాగవుతాయి, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడడానికి చర్చించడానికి మనం ఈరోజు ఇక్కడ కలుసుకున్నాం. This is the third in series of the regional conferences on FPOs and CBBOs. The first one was on 21st April in Pusa complex at Delhi, inaugurated by Honorable Agriculture Minister Sri Narendra Singh Tomar ji and attended by our both MOSs Kailash Chaudhary ji and Shobha madam. So this is the third one. So why we are doing this? So we have a program, we have a scheme, we formulate guidelines and we circulate those guidelines and that's it. So after that, it is the work of the implementing agencies, the states which does the monitoring, etc., etc. But the idea here is not just to leave the very important task of formation and promotion of FPOs to CBBOs or implementing agencies, but the government of India has a very keen and deep interest and involvement in the progress of farmers. So that is why we thought of reaching out to all the states through these regional conferences. So maybe in the future we will go to the individual state and also review and monitor the progress. But to begin with, 4 or 5 states together at one place, in one state, we are organizing these conferences. We all know the guidelines. We all know what is an FPO. We all know what is a CBBO, how CBBOs function. So there are 13 implementing agencies so far under the guidelines. And these implementing agencies in turn are empaneling CBBOs. There are 276 cluster-based business organizations which have been empaneled by these 13 implementing agencies. And these 276 cluster-based business organizations are in turn hand-holding and nurturing, forming and promoting the farmer-producer organizations. So that is, the organizational architecture. But what exactly important is how fast you are mobilizing the farmers, how well you are making the business plan, and how well the farmer-producer organization is able to execute that business plan and do processing activities, do export activities, do production activities, do marketing activities, and increase their farm incomes. The whole idea is to how do we actually increase farmers' incomes through formation and collectivization of FPOs. That is the whole idea. So there is a procedure, the farmer collectivization, bringing all farmers together, meeting their minds, and then making a business plan itself takes a lot of time. So that is the first step. The first initial step takes a little bit of time. So I want to request all the implementing agencies and CBBOs to move this faster. That happens only when the CBBO has single-minded determination to make it happen. So there are so many examples. हम लोगों ने पिछले conferences में भी देखा है कि बहुत सारे CBBOs FPO के पास जा भी नहीं रहे थे, FPO से मिल नहीं रहे थे, FPO से बात नहीं कर रहे थे, FPOs को हैंड होल्ड नहीं कर रहे थे. So ऐसे CBBOs को बहुत ही stern warning है कि those CBBOs will be, after rating and after reviewing their performance, they may be eliminated also. And at the same time, we want to encourage good cluster-based business organizations which are taking keen interest in making these FPOs, promoting them, hand-holding them, nurturing them. So we want to increase the number of FPOs given to them beyond 25. So that decision also has been taken by the government. So very soon, those CBBOs जो अच्छा कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा, उनको 25 से ज़्यादा भी FPOs दिया जाएगा. लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनको दंडित भी किया जाएगा, दंडित इन द सेंस उनको हटा भी दिया जाएगा. सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि
किसी भी हाल में FPOs को प्रमोट करना है, बहुत जल्दी प्रमोट करना है, जल्दी से जल्दी उनसे बिजनेस प्लान बनवाना है और एक्टिविटीज शुरू करना है. This is the 10,000 new FPO program. We have been forming FPOs even earlier also, but this is with a mission mode. This is the new mission of government to encourage farmers to come together and do business. ये फार्मर नहीं, फार्मर को एक एग्रीप्रेन्योर के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं. రైతులాగా నీరసంగా ఉండకూడదు, రైతు ఒక వ్యాపారిలా మారాలి. దిస్ ఈజ్ ది మోటో बिहाइंड दिस प्रोग्राम. कैसे हम एक किसान को एक व्यवसायी के रूप में, किसान को एक बिजनेसमैन के रूप में देख सकते हैं, एक एग्रीप्रेन्योर के रूप में देख सकते हैं. देयर आर umpteen number of good FPO examples in this country today who are actually doing business in hundreds of crores of turnover. So those are the models, those are the trend setters. मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग वहाँ जाके भी देखें. ऐसे ऐसे FPOs को हम चिन्हित कर रहे हैं. Those who are really doing well, उनको देखें, उनको जाकर उनके बिजनेस मॉडल्स को देखें, उनके जगह पे जाके देखिए. कुछ स्टडी विजिट्स भी CBBOs ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज को दिखा सकते हैं. अगर पर्टिकुलर FPO बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो आप दूसरा FPO क्यों नहीं कर सकता है. इस तरह उनको एंकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं. तो ये सारा कार्यक्रम आगे करना है. उसके साथ साथ अभी हम आधा रास्ता तय किए हैं. अभी केवल 5,000 तक मात्र FPOs का एलोकेशन हुआ है. उसमें करीब हमारी अचीवमेंट परसेंटेज 70-75 तक पहुंची है और बहुत जल्दी उसको 100% कर देना है. उसके बाद इसी महीने में हम नया एलोकेशन 5,000 का एलोकेशन करने जा रहे हैं ताकि हमारा 10,000 का पूरा एलोकेशन हो जाए. उसके बाद उसकी प्रमोशन और फॉर्मेशन एंड प्रमोशन हो. तो ये पूरा हमारा टारगेट है अप टू 23-24. इसके बियॉन्ड भी अनदर 3 years के लिए CBBOs को नर्चरिंग एंड हैंड होल्डिंग करनी है. उसके साथ साथ सारे FPOs को हम लोगों ने एक तय किया था कि 30-31 मई तक कम से कम 1,500 FPOs को हम इक्विटी ग्रांट बांटेंगे. आप सभी को याद होगा पिछली बार 1 जनवरी 2022 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों से हम लोगों ने इक्विटी ग्रांट रिलीज़ किया था 352 FPOs को, करीब 14 करोड़ रुपया. अभी 352 में हम लोग रुकना नहीं है, उसको उस संख्या को 1,500 तक ले जाना है. ये लक्ष्य हमने रखा है. तो अभी बहुत त्वरित गति से उसकी काम चल रहा है. मेरा रिक्वेस्ट ये है कि सदर्न स्टेट्स हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं. उनके अंदर एक अजीब सा ये रहता है, दृढ़ संकल्प रहता है कि अच्छा करना है, हमेशा आगे जाना है, और एक डिसिप्लिन भी रहता है. तो उसी डिसिप्लिन और उसी दृढ़ संकल्प के साथ मैं आप सभी को आज के दिन में आह्वान करती हूँ कि आप और आगे बढ़े और अच्छा काम करें. और ये जो इक्विटी ग्रांट देने वाली जो नंबर है उसको 1,500 तक ले जाना है. अभी करीब 800 तक आपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वगैरह किया है, उसको और आगे बढ़ाइए ताकि 1 जून से 15 जून के बीच में बहुत सारे कार्यक्रम करनी है. सरकार की 8 years कंप्लीट हो रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स लाइंड अप. इसी बीच में हम लोग चाह रहे हैं कि ये इक्विटी ग्रांट भी बंटवा दे. उसके साथ साथ इक्विटी ग्रांट देना मतलब बच्चा को थोड़ा सा सहारा देना. जो बच्चा अभी चलना फिरना सीख रहा है उसको थोड़ा सहारा देना होता है. बट एट द सेम टाइम क्रेडिट गारंटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप सभी जानते हैं कि 2 करोड़ रुपीस तक क्रेडिट गारंटी विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी गवर्नमेंट देने को तैयार है. आपका जो रिस्क है, किसान का जो रिस्क है, वो सरकार उठा रही है. उसके लिए सरकार स्थिर संकल्प से खड़ी है आपके पीछे कि हम गारंटी देते हैं. आप बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के अप टू 2 करोड़ रुपीस आप लोन ले सकते हैं किसी भी बैंक से. इसको आगे बढ़ाना है. जब तक आप क्रेडिट नहीं लेंगे इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब तक आप बिजनेस करने के लिए आपके हाथ में कुछ बल नहीं होता है, कुछ पूंजी नहीं मिल पाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट गारंटी फंड का भी सदुपयोग करें. वी हैव ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड 1,500 crore वर्थ फंड विथ नाबार्ड
out of which we have already given 150 crores. So एक नैब संरक्षण के अंदर एक ट्रस्ट भी बना है क्रेडिट गारंटी देने के लिए। तो आप सभी CBBOs को मैं आह्वान करती हूँ आज कि आप क्रेडिट गारंटी कवर जरूर दिलाइए FPOs को। सबसे पहला स्टेप इक्विटी ग्रांट कराइए, फिर क्रेडिट गारंटी दिलाइए, ताकि इनके बिजनेस प्लान अच्छे बने और ये कुछ आगे चलकर कुछ प्रोडक्शन में काम करें, मार्केटिंग में काम करें, प्रोसेसिंग में काम करें। ये सब करके इनको आमदनी ज़्यादा हो, यही संकल्प है। इसी संकल्प के साथ हम आज सदर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं। तो आज दिन भर का कार्यक्रम है। इनॉग्रल सेशन के बाद CBBOs का भी प्रेजेंटेशंस हैं, सक्सेस स्टोरीज, करीब 10-12 सक्सेस स्टोरीज भी FPOs का हम सुनेंगे। अन्य कॉन्फ्रेंसेस में बहुत अच्छा देखने को मिला, इतना अच्छा सक्सेसफुल स्टोरीज सामने आ रहे हैं, तो आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मैं सभी CBBOs को भी ये कहना चाहूँगी कि आप सक्सेस स्टोरीज इकट्ठा करके हमको भेजिए। वी विल रिलीज ए कॉफ़ी टेबल बुक और वी विल रिलीज सम सक्सेस स्टोरीज को कंपाइल करके बुक्स बना के भी वी वुड लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट सो दैट अदर्स कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज सक्सेस स्टोरीज। सो ये सारे बातें मुझे आज कहना है आप सभी के सामने। और आप सभी लोग इतना इंटरेस्ट लेके, इतना रुचि लेके इतने दूर से आए हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीम्स, माई DMI teams and my Government of India teams and the team from Karnataka, especially WDD team, who have really helped us with everything, with all the arrangements, venue arrangements, food arrangements, everything. In a very, very short notice, they have made it happen. So I thank Mr. Venkatesh and the Agriculture Minister and Agriculture Secretary for all the cooperation and support and help. I once again welcome you and thank you at the same time for taking keen interest and coming from far away places, especially from Puducherry also, Andaman and Nicobar also we have invited people. So from all other 4-5 very important southern states. Thank you very much. All the best. Thank you, Madam, for the beautiful context setting and also carrot and stick policy that Government of India will hold forth. That's also a beautiful, sweet warning. Maybe we should remember that. Thank you very much, Madam. May I invite Shri B.C. Patil, sir, Honorable Agriculture Minister, Government of Karnataka. Karnataka Sarkarada, Krishi Sachivarada, Sanmanya Shri B.C. Patil, sir. Daimachi, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ವಣಕ್ಕಂ, ನಮಸ್ಕಾರಂ. Today, the function, Southern Region Conference of Cluster-Based Business Organization, the dignitaries on the dais, Sri Kailash Chaudhary ji, Madam Shobha Karalla ji, Central Secretary Srimati Vijayalakshmi ji, our Horticulture ACS Rajendra Kumar Katere ji, Director Srimati Nandini Kumari, Watershed Commissioner Sri Venkatesh, Director B.Y. Srinivas, Padma Naik and Ashok and all. It's my pleasure to invite you all to Karnataka and to take part in this regional conference. There is a say, farmers are the backbone of India. But all these years, this backbone was broken and it was not strengthened. With the innovation of and the strengthening of FPOs, the dream of Modi ji is to strengthen the backbone of India, that is forming a farmers producer organization. With this now, the farmers can stand on their own leg and provide
to all India. Karnataka is having 69 lakhs of farmer families having less than 1 hectare of land. There is a need to empower them to access for quality production and marketing facilities. Under the circumstances, FPO is the best means of developing an institutional mechanism to produce and quality producers and to facilitate both forward and backward linkage to enhance their income. Knowing the potential significance of FPOs, our Honorable Prime Minister launched a flagship CSS program known as Formation and Promotion of 10,000 FPOs in 2020 over a period of 5 years. I am happy to bring to the kind notice of the House that the Watershed Department of Government is designed as only the implementing agency for the flagship FPO program. In addition to this, Watershed Department, NABARD, SFPC, NCDC, NAPED, and TRIFED are the other agencies implementing this scheme in Karnataka. Under this scheme, Government of India provides a budget of 18 lakhs per FPO as operational cost over a period of 3 years. In addition to this, the concerned cluster-based business organization are also provided with rupees 25 lakhs over a period of 5 years for the formation and incubation cost for the FPO establishment. Further, an inquiry equity matching grant of rupees 2,000 per farmer member with a ceiling limit of 15 lakhs per FPO will also be extended as in simultaneously. FPOs are also eligible for collateral-free guarantee fund up to 2 crore for business development. FPOs are also eligible to get funding under PMFME to an extent of 35% subsidy, not exceeding a total subsidy of 10 lakhs. I am happy to announce that our present Honorable Chief Minister Sri Basuraj Bommai to promote FPOs under PMFME scheme as per the guidelines of ODOP is established, will also get an additional subsidy of another 15%, not exceeding 15 lakhs subsidy. With this top-up subsidy by Government of Karnataka, FPOs applied under ODOP will be getting a maximum of 50% subsidy. After the commencement of 10,000 FPO scheme in the last 2 years, Watershed Development Department could able to register 107 FPOs as against the target of 310. Under the Amrit Farmers Producer Organization, allocating a total target of 750 FPO formation in Karnataka to commemorate the 75th Independence Amrit Mahotsav. Karnataka government through the Department of Horticulture at the premises of Horticulture University, Bengaluru campus has established the Center of Excellence on FPO and declared as knowledge partner and CAPEC organization as business development partner in present FPO program. Just a day before, I visited Bombay along with the delegation composing of senior officers in Mumbai like irradiation facilities, water vapor treatment facilities, hot water treatment facilities, pack house facilities and perishable cargo facilities created by APEDA, and had a long discussion with more than 20 exporters of various commodities, especially like chili, banana, mango, grape, pomegranate, etc. After the meeting, I have decided to shortly organize a Karnataka FPO exporters meet, calling all the exporters from Maharashtra and also from various parts of India, in collaboration with APEDA, CAPEC and Department of Agriculture to promote FPOs to improve their financial status. A separate marketing platform also been created on Rashtriya marketing platform called eName to promote online trading by FPOs. By now, 281 FPOs in the country have been boarded on eName MS platform. CAPEC organization has been promoting export activities of agriculture produce in Karnataka, and Government of Karnataka has allotted rupees 50,000 crores in its 22-23 budget to promote the cluster-based export
facilities with a funding of 5 crore in each cluster district. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has recently declared to make every district of our country as an export hub, and anybody, any entrepreneur or any FPOs would be able to export their products directly from the district headquarters to any global destinations. In this regard, APEDA has worked out the demand of various products that could be exported from India to 205 countries. To realize the dream of our Honorable Prime Minister, I request both the Central Minister present on the dais, Sri Kailash Chaudhary ji and Madam Shobha Karanlaje ji, to provide additional fund of create government export facilities through FPOs in all the districts of Karnataka, in addition to the support given by our state government to establish 10 cluster districts, export hubs with an allotment of rupees 50 crores. Every country has its own requirement, quality, standards for import and export of agricultural commodities. The FPOs should be trained well to produce the quality products produced without pesticide residue as per requirement of the importing countries. In this regard, I have directed the CAPEC organization and the Department of Agriculture in association with APEDA and agriculture universities to jointly organize awareness training program to adopt the good agriculture pesticide practices to produce the residue-free quality exportable products to the farmers interested in export of agriculture commodities. At the end, but not least, I request all the delegates of FPOs coming from various parts of South India to take the advantage of one-day workshop and enjoy the environment of air-conditioned city of Bangalore, which is considered as IT hub, scientific capital of India and declared by UNESCO as 4th city of global technology hub. I end my speech by quoting strength FPOs, strength farmers to strengthen India as hub of global food export. Secretary, Marketing Government of India, Srimati Vijayalakshmi ji, for excellently organizing this one-day workshop in Namma Bengaluru. Thank you. Dhanyawad. Thank you, sir. May I request the Minister of State Agriculture and Farmers Welfare, Shri Kailash. भारत माता की। थोड़ा जोश के साथ में, सारी व्यवस्था है भोजन की, चिंता ना करें। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य उपस्थित हमारी भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय बहन सुश्री शोभा करंदलाजे जी और हमारे मध्य उपस्थित कर्नाटक सरकार में ऊर्जावान जन जन के हृदय में बसने वाले ऐसे हमारे कृषि मंत्री आदरणीय बीसी पाटिल जी और जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार कृषि मंत्रालय से श्रीमती विजयलक्ष्मी जी और प्रमुख शासन सचिव कृषि राजेंद्र जी कटारिया जी, कमिश्नर श्री वेंकटेश जी, डायरेक्टर श्री BY श्रीनिवास जी, श्रीमती नंदिनी जी, श्री पद्मयन नायक जी, डॉक्टर श्री अशोक आलू जी और सभी उपस्थित हमारे किसान भाई, सभी CBBO के प्रतिनिधिगण और स्टेट गवर्नमेंट के सभी अधिकारीगण और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिसर्सगण और मीडिया के बंधु और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज
ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। भारत सरकार का जो विजन है और जो किसानों के लिए काम करने का जो लक्ष्य है उसके बारे में मुझसे पूर्व वक्ता जिन्होंने अपना पूरा विस्तृत विषय रखा, और लक्ष्य एक ही है कि किसानों की इनकम हम सबको मिलकर बढ़ानी है। किसान आत्मनिर्भर, किसान सशक्त होगा तभी देश मजबूत होगा, देश सशक्त होगा। और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि किसानों के लिए हम कुछ करें जिससे कि किसान आत्मनिर्भर बने। पहले भी सरकारें रही, सबने अपने स्तर पर काम किया, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया कृषि के ऊपर, और उसी का परिणाम है कि आज कृषि के अंदर उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। एक्सपोर्ट भी इस देश का बढ़ रहा है, और एक समय था जब हम इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज हम सरप्लस हैं और उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कृषि के लिए बजट को बढ़ाना जरूरी था। जब तक किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बजट नहीं होगा, वो विभाग आगे नहीं बढ़ सकता, उस विभाग से संबंधित विकास नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, उससे पहले 2013 तक कृषि का टोटल जो बजट था वह बजट था अधिकतम 23,000 करोड़, अधिकतम 23,000 करोड़ था। लेकिन अब कृषि का जो बजट है वह बजट है 1,32,000 करोड़, यानी कि 7 टाइम अधिक, 6 टाइम अधिक है। जहां सिर्फ 23,000 था, वहां 1,32,000 करोड़ अगर हो जाता है तो इससे स्पष्ट होता है कि कृषि के प्रति प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं और किस तरह से कृषि के लिए काम कर रहे हैं। और उसमें से आधा तो जो है वो किसान सम्मान निधि के तौर पर पीएम किसान के तहत डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर डीबीटी के माध्यम से लगभग 65,000 करोड़ रुपए, जो उस बजट का आधे से अधिक पैसा है, वो डायरेक्ट किसान के खाते में जाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए लगातार चिंतित हैं और नई नई योजनाएं बनाकर कैसे किसान को लाभ मिले। चाहे उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया हो, 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया, जिससे कि एफपीओ उस फंड का उपयोग कर सके, जिससे इंडिविजुअल किसान भी उस फंड का उपयोग कर सके। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ये प्रावधान है कि कोई भी किसान टेक्नोलॉजी को प्रारंभ किया गया है, ड्रोन का उपयोग करे किसान, जिससे कि पेस्टिसाइड है या वो फर्टिलाइजर है उसका छिड़काव कर सके। मानव के शरीर के ऊपर जो उससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं केमिकल की वजह से, उससे बचा जा सके, और उसके साथ ही समय बच सके, समय की बचत हो। क्योंकि समय जो पहले किसान अगर स्प्रे करता था तो उसमें उसको अपने खेत में कितना ही समय लग जाता था, लेकिन ड्रोन से स्प्रे करने से उसके 1 घंटे में वो लगभग 10 से 15 हेक्टेयर तक वो स्प्रे करके आ सकता है। तो इस तरह से उससे समय भी बचेगा, और उसमें पेस्टिसाइड या जिस तरह से उसका कितना उपयोग होता है, उसको कहाँ कितना आवश्यकता है, उसकी सैटेलाइट से इमेजरी लेकर भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से नई टेक्नोलॉजी से भी किसानों को जोड़ें, जिसमें एफपीओ को विशेष सपोर्ट मिले,
तो इसमें अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई लेता है तो उसके लिए उसमें जो सपोर्ट है 40% की सब्सिडी है। वहीं पर एफपीओ अगर इसका ड्रोन अगर कोई परचेज करता है तो उसके लिए 75% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए हर योजना में एफपीओ के माध्यम से हम अपने किसानों को किस तरह से सस्टेनेबल कर सकें, उनको किस तरह से मजबूत कर सकें, तो इस तरह से ये भारत सरकार ने आने वाले समय में हम किसानों को मजबूत करें और उनको संगठित करें। और इसके लिए एफपीओ का जो कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी लाए हैं और उस एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान हैं उनका अपने जीवन के अंदर उपयोग कर सके, किसान को लाभ मिले, और उसी के निमित्त आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और ये यहाँ पर जो मेरे सामने टीम बैठी है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब के ऊपर जो यहाँ पर अधिकारी उपस्थित हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो कर्नाटक की सरकार हो या अन्य स्टेट से जो हमारे आए हैं रीजनल से, उन सभी ऑफिसर्स की और सभी सीबीबीओज की ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारे एफपीओ है, वो समय पर स्टैंड हो जाए, समय पर उनकी संख्या जो उनकी निर्धारित है 300 प्लस वो संख्या हो जाए और इक्विटी ग्रांट तुरंत एफपीओ को मिले। और उसके बाद में एफपीओ अपनी खुद की सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करके और प्रोसेसिंग यूनिट की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दे, ताकि उससे एफपीओ के उससे किसान को तुरंत हमारा एफपीओ है वो एक्टिवेट हो जाए और एफपीओ को तुरंत उससे किसान को लाभ मिलेगा और दूसरे किसान भी उस एफपीओ को देखकर स्वतः ही उस एफपीओ को मेंबर बनेंगे। आज हमारे को प्रयास करने पड़ रहे हैं किसानों को मेंबर बनाने के लिए, लेकिन भविष्य के अंदर ऐसी स्थिति बननी चाहिए कि होड़ मचे कि मैं उस एफपीओ का मेंबर बनूं, और उसके लिए सीबीबीओ को भी मेहनत करनी पड़ेगी और एफपीओ के यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, चेयरमैन और जो उनके डायरेक्टर हैं, उनकी भी बनती है। और मैं आज यहाँ पर बड़े ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत जल्दी इसको हम लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। और यहाँ पर जितने किसान बैठे, मैं आप किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ और सीबीबीओ से भी कहना चाहता हूँ कि सीबीबीओ की भूमिका अलग है और किसानों की भूमिका अलग है। किसान, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने प्रतिनिधि है वहां पर किसानों को मैं यह आग्रह करूंगा कि अपने को ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके मेंबर बने। लेकिन इससे ऐसा नहीं कि सीबीबीओ भी मुक्त रहे, पूरी जिम्मेवारी सीबीबीओ की है। ये गाइडलाइन में स्पष्ट है कि पूरा उनके मेंबर से लेकर और उसके बाद में उनकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करके और उसके बाद में उनकी किसान का पूरा उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उनकी हैंड होल्डिंग कराने के बाद, उसके बाद में उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पूरी कैसे हो सके उसको करने के बाद उनको 4-5 साल बाद में जाना है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इससे पहले आप सबसे यही आग्रह है कि हमारे किसानों की आप तुरंत प्रभाव से मेंबर भी बनाएं और सॉर्टिंग, ग्रेडिंग की यूनिट जो भी बनाना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट तुरंत प्रभाव से सबमिट करवा दें। और विशेषकर जैसा कि मुझसे पूर्व में विजय लक्ष्मी जी ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। हम अभी पिछले लगातार 1 महीने से रीजनल बैठकें कर रहे हैं। अभी 2 रीजनल बैठक हो चुकी है और उस 2 रीजनल बैठक का जो हमारे सामने आकलन आया, उस आकलन को देखने के बाद हम अभी भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सीबीबीओ जिस तरह से काम कर रहे हैं वो उनकी भूमिका को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि हम सिर्फ यहाँ पर किसी एनजीओ के माध्यम से या किसी प्रकार की कंपनी बनाकर कि हमें आने वाले 5 साल तक यहाँ पर काम करना है और काम करने के बाद में हमें यहाँ से जाना है
और जो 6 करोड़ रुपए 6.5 करोड़, क्योंकि एक सीबीबीओ को हम 25 लाख रुपए जो सरकार दे रही है, एक एफपीओ को ट्रेनिंग करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और वो 25 लाख रुपए अगर एक एफपीओ के पास में 25 अगर एफपीओ हैं तो 6,50,000 6.5 करोड़ रुपए होते हैं। ये पैसे आपको जिसके लिए दिए जा रहे हैं वो हमारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कई जगह पर मैं देखता हूं कि सीबीबीओ है वो जाकर एफपीओ को गाइड करते हैं, लेकिन वो उनके वहां पर जाते बहुत कम है। आपको क्या बनी है वो हम सब जानते हैं। पहले होता था कि हमने 5 करोड़ या 6 करोड़ रुपए ले लिए और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स या कागजों के अंदर उनके नाम किसानों के लिख दिए जाते या फॉर्मेलिटी कर दी जाती थी, और फॉर्मेलिटी करने के बाद में वो काम पूरा हो जाता था कि हमने उसके लिए ये काम कर लिया। डॉक्यूमेंट्स में काम अब नहीं चलना है। अब जो ईमानदारी से काम करना चाहता है वही काम करेगा, और इसकी लगातार रिव्यू बैठक होगी। और मैं आज यहां मंच से कहकर जा रहा हूं कि 2 महीने बाद में इसी तरह की पुनः रिव्यू बैठक होगी, और वो दूसरे स्टेट के अंदर होगी जिसकी आपको सूचना मिल जाएगी। वो लगातार मैं स्वयं रहूंगा, शोभा जी भी रहेगी, और रहकर आने वाले समय के अंदर इसके लिए आपने कितने मेंबर बनाए, अभी आपकी क्या रिपोर्ट है, आगे इस 2 महीने के अंदर आपने क्या काम किया, लगातार हर 2 महीने के अंदर हम लगातार आपके बीच में आते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। इसलिए आप वो पहले वाला विषय छोड़ दें कि हम पहले कुछ ऐसे एनजीओ या कंपनी थी काम करती थी, लेकिन अब अगर कोई ऐसा सोच के अगर उसका कोई अगर एफपीओ का सीबीबीओ अगर उसने फॉर्म किया है या यहाँ पर भाग लिया है तो वो स्वेच्छा से अपना यहाँ पर इस्तीफा देकर कि मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता, वो स्वेच्छा से जा सकता है। और स्वेच्छा से नहीं जाना चाहता तो आने वाले समय में जो ABC ग्रेडिंग हमारे यहाँ विभाग के द्वारा की जा रही है, जो बेस्ट काम करेगा उसको और ज्यादा प्रमोट करके और उनको और ज्यादा हम सीबीबीओ एफपीओ उनको बढ़ा दिए जाएंगे, 25 से भी उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जो 25 से कम या उन्होंने अपने कभी किसी एफपीओ के पास में गए ही नहीं या उन्होंने उसका काम को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया है तो उसको हटाने का काम भी विभाग के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि जो काम नहीं करे उसके लिए क्या आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को उस काम मिलना चाहिए? यहां पर मैं किसान भाई बैठे हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कितने किसान हैं यहां पर, एफपीओ के कितने मेंबर्स हैं? जो एफपीओ है वो, क्या आप चाहते हैं कि सीबीबीओ अपनी भूमिका से पूर्ण रूप से निर्वहन करे या नहीं करे? क्या चाहते हैं आप लोग सीबीबीओ को? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीबीबीओ पूर्ण रूप से आप काम करें और एफपीओ के मालिक बनकर ना बैठें। सबसे बड़ा अगर कोई इस जगह पर इसमें है तो हमारे किसान प्राथमिकता में है, हमारे एफपीओ प्रमुखता में है, सीबीबीओ सिर्फ और सिर्फ उसके सपोर्ट में है। कई जगह पर मैं देखता हूं कि पूरा सीबीबीओ है वो एफपीओ को जैसे कहते हैं ऐसे करिए, आप यही करना पड़ेगा, या हम कहें वैसे नहीं। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप स्वयं बनाएंगे, किसान अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप उसके अंदर खुद बैठेंगे कि हमारे ये किसान हैं, हमारे 300 मेंबर हैं, 500 मेंबर है या 700 या 1000 मेंबर है। वो मेंबर्स बैठकर तय करें कि मेरे इस उत्पादन से मैं ये प्रोसेसिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करूंगा। उसका निर्णय जीबी की मीटिंग के अंदर होगा, जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर करना है। जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर आपके चुनाव भी होंगे, चुनाव का निर्णय भी आप करेंगे। कोई ये नहीं है कि दूसरा व्यक्ति तय करेगा कि ये चेयरमैन होगा, ये डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर और चेयरमैन का तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे किसानों को है, हमारे एफपीओ के मेंबर्स का है। सीबीबीओ को ये अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि इसका डायरेक्टर कौन होगा, इसका चेयरमैन कौन होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ये मेरे किसान भाइयों को अपनी गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट ध्यान होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है।
इसलिए आप सबसे मेरा यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे सीबीबीओ हैं वो अपनी प्रोजेक्ट की जो सबमिट जो रिपोर्ट है वो अपनी तुरंत बना दें और इक्विटी ग्रांट के लिए तुरंत जो भी आपको आवश्यकता है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भारत सरकार को आप सबमिट कर दें। और निश्चित रूप से भारत सरकार है वो आपके साथ खड़ी है। हम ये नहीं चाहते कि जो मैंने पहले ही कहा जो अच्छा करेगा उसका प्रमोशन करेंगे और जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको हटा भी देंगे। तो स्पष्ट कहना है कि हमारे आने वाले समय के अंदर हम देश के किसानों के लिए, जब देश के प्रधानमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम फिर क्यों बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दिन में सिर्फ 4 घंटे नींद लेते हैं। वो रात को कब 2 बजे तक 12, 1, 2 बजे तक काम करते हैं, सुबह 4 बजे वो उठ जाते हैं और वो देश के लिए कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं मुझे बताइए आप। उनके परिवार के अंदर तो पीछे वो तो घर छोड़ के निकल चुके, उनको किसके लिए करना है। घर पर उनको कुछ नहीं लेके जाना है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरे देश को आगे बढ़ाना है, मेरे देश को सशक्त करना है। और वो सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा है कि भारत को सोने की चिड़िया भी बनाना है और विश्व गुरु बनाना है, भारत को तो उसके लिए कुछ करना होगा, सिर्फ बैठने से कुछ नहीं होगा। आज मेरे को मान लो मंत्री बना दिया, शोभा जी को मंत्री बना दिया, यहाँ पर हमारे माननीय पाटिल साहब बैठे हैं, ये मंत्री बन गए। तो मंत्री बनकर हम भी तो आराम से बैठ सकते थे। पहले जो लोग बैठे थे वैसे हम भी बैठ सकते थे, एयर कंडीशन के अंदर बैठते, वर्चुअल आपसे हम जुड़ सकते थे। हम यहां से वहां से यहां तक आए, यहां आकर यहां पर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। लगातार आगे भी मीटिंग का दौरा जारी है। मैं अभी शोभा जी से यही बात कर रहा था, इनके भी आगे कार्यक्रम है, मेरे भी कार्यक्रम है कि हम कौन सी फ्लाइट से या कौन से साधन से हम तुरंत उस स्थान पर अगली मीटिंग करें। एक एक मिनट के लिए हमारे पास में समय नहीं है कि किस तरह से हम समय को करें कि हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारे को जो विश्वास किया है उसके ऊपर हम खरा उतर सकें। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं सारा देश के अंदर। इस तरह से सब जब करेंगे तभी हम अपने काम को लक्ष्य आगे बढ़ा पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया वो इसीलिए दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये सभी के प्रयासों से संभव होगा। और निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कृषि के अंदर हमारा देश सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर होगा। आप काम करें या ना करें, लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आने वाले 10 साल बाद देश की कृषि के अंदर, जीडीपी के अंदर देश की जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा योगदान होगा तो वो कृषि का होगा। और इसमें कोई असंभव चीज नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जब आजाद हुआ था, जब भारत हमारा देश, और जब देश आजाद हुआ था उस समय कृषि की जो जीडीपी है, देश की जो जीडीपी है उसके अंदर कृषि का योगदान 50% से अधिक था। जब भारत हमारा आजाद हुआ उस समय जीडीपी का योगदान है वो जीडीपी के अंदर कृषि का 50% से ऊपर से योगदान था। और धीरे 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 कृषि नीचे चली गई। लेकिन अब कृषि को हमें ऊपर उठाने की आवश्यकता है। कृषि को ऊपर उठाने के लिए हम सबको ये जिम्मेवारी मिली है। मैं सोचता हूं कि हम भाग्यशाली हैं। कोई ये निश्चित रूप से अपना कोई पुण्य ही है जिसकी वजह से हमें भी इसके अंदर काम करने का अवसर मिला है। सीबीबीओ को अभी अवसर मिला है कि सेवा करें, और हमारे जो एफपीओ के मेंबर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको भी ये अवसर मिला है कि मेरे नीचे जो रहने वाले किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको जोड़कर मैं भी एक सेवा का काम करके और मेरे देश की कृषि को आगे बढ़ा सकूं। और जितने अधिकारी भी बैठे हैं उन अधिकारियों को भी मैं सोचता हूं कि आपको भी ये एक अवसर मिला है। ऐसे समय के अंदर जब भारत आगे बढ़ रहा है उस समय आपको भी सेवा करने का अवसर मिला है। इसलिए इस काम को बड़ी ताकत के साथ और मेहनत के साथ और अपनी ऊर्जा के साथ में और एक उत्साह के साथ में करने की आवश्यकता है। बोझ लेकर कुछ भी काम नहीं करना है। अगर आपने समझ लिया कि मैं सिर्फ पैसे के लिए यहां पर बैठा हूं, करना है मुझे, तो वो बोझ होगा। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो सेवा करते हैं घर छोड़कर, और वो अपने दिन में सर्विस करते हैं, रात को सेवा करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा दुनिया याद करती है जो अच्छा काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी पहचान उस तरह की बननी चाहिए
और कृषि के अंदर हम आने वाले समय के अंदर हमारे देश को आगे बढ़ाएं। और कृषि के लिए मैं आपको ये मिथक को हमें समाप्त करना है। ये कहा जाता है कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और लास्ट में नौकरी थी, लेकिन धीरे 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 इसका उल्टा हो गया। अब सर्विस में जाना लोग पसंद करते हैं। युवा हमारा खेती में जाना चाहता है, नौकरी में जाना चाहता है, खेती में नहीं जाना चाहता। इसको खत्म करना है। इसलिए आने वाले समय में पुनः उत्तम खेती हो, हर युवा खेती के लिए आए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि कृषि के अंदर कितनी संभावना है। एक गवर्नमेंट में जॉब करने वाला आईएएस ऑफिसर की अधिकतम तनख्वाह कितनी होती होगी? जो सीनियर है उसकी भी 2 लाख या 2.25 लाख के आसपास उसकी सैलरी होती है, और उसके साल के उसकी अधिकतम मिलाकर 30 लाख रुपए इनकम होती है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये जो परिसर जो अपने सभा भवन ये हॉल बना हुआ है, इस परिसर के अंदर, इस हॉल के अंदर अगर एक मशरूम की खेती अगर अपन कर लें, इस हॉल के अंदर जितना ये क्षेत्रफल है, जितना ये एरिया है, 1 करोड़ रुपए की इनकम है किसान के। 1 करोड़ रुपए की इनकम, ये नेट मैं कह देना चाहता हूं साल की। सिर्फ इतने परिसर के अंदर आप मशरूम की खेती कर लीजिए। बाकी की दूसरी इतनी क्षेत्र के अंदर अपन हॉर्टिकल्चर की और दूसरी जिस तरह से पॉली हाउस, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स की खेती करते हैं, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स की खेती करने वालों की भी इतने परिसर के अंदर करता है तो साल के कम से कम 50-60 लाख रुपए कमा लेता है, या 25-30 लाख रुपए तो निश्चित रूप से कमा सकता है। लेकिन अब मेरे देश के युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं आपसे, युवा बहुत जो हमारे स्टार्टअप है ना, उस स्टार्टअप के अंदर आप देख लीजिए इतनी संभावना और इतने स्टार्टअप ने आगे बढ़े हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मशरूम की खेती का ही बताना चाहता हूं। जो मैंने अभी उदाहरण दिया वो बताना चाहता हूं। मेरे पास में आज से 3 साल पहले, 3 साल हो गए, पहले मेरे पास में आया था लगभग 2.5 साल पहले 10 लड़के आए, सिर्फ 12th में पढ़ने वाले, और उन्होंने कहा कि हम वेस्ट से वेल्थ को काम, जो प्रधानमंत्री जी का सपना उसको पूरा करेंगे। पराली की बड़ी समस्या है, पराली जैसे कि आप सब सुनते ही हैं कि उससे पॉल्यूशन हो रहा है, और जो हमारी बोटल्स है वेस्ट जिसको हम फेंक देते हैं, वो बोटल्स, उस बोतल के अंदर उन्होंने मशरूम को पराली को डाल के और मशरूम पैदा किया, और मशरूम अलग बेचा, उसकी सेल किया, और उसी का वेस्ट का वापस उन्होंने प्रोसेसिंग करके बायोडीजल तैयार कर दिया, और उसने सीएनजी की गैस तैयार कर दी, और उसके साथ ही लाइट जनरेट करने का काम कर दिया उसी वेस्ट से। और ये टाइल्स है जो नीचे फर्श पे बनती है, उस टाइल्स को भी तैयार कर दिया। यानी कि उस वेस्ट से 4 प्रोडक्ट तैयार कर दिए, और वो ही जो बनाए तैयार हुए उसी का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मशरूम की खेती में ये अगर प्रोडक्ट साथ में डाल दे वेस्ट टू वेल्थ को, और जो हमारी जो मशरूम है, तो उससे 1 करोड़ रुपए किसान कमा सकता है। और उसके लिए यह है कि सरकार का प्रावधान भी है, इतने परिसर को बनाने के लिए पैसा भी चाहिएगा, लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर किसान को इसमें भी सपोर्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आपके, और यहाँ पर मंत्री जी भी बैठे हैं, शोभा जी बैठे हैं, शोभा जी बहुत एक्टिव है यहाँ पर, आप हम सब देख रहे हैं। और ये भी हमेशा हम जब बैठते हैं तो शोभा जी इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए, मेरे देश के किसानों के लिए हम कुछ करें। तो ये अवसर है, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में सब आए हैं। आगे जो प्रेजेंटेशन होगा, उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो अच्छा काम किया जिन्होंने, एफपीओ ने, उनके प्रेजेंटेशन भी होगा, वो भी देखने को मिलेगा। और उसके बाद में लास्ट में जो सत्र होगा, उस सत्र के अंदर, जो अंतिम सत्र होगा, उसके अंदर आपसे विचार विमर्श किया जाएगा। एफपीओ को अलग से पूछा जाएगी, आपके सामने जो हमारे डायरेक्टर हैं या हमारे, उनसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना चाहिए, भारत सरकार से आप क्या चाहते हैं जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। और सीबीबीओ के सामने भी कुछ समस्याएं आ सकती है, जो अभी, हालांकि सीबीबीओ की हमने मीटिंग दिल्ली के अंदर ली थी, उसमें सारे सीबीबीओ वहां पर उपस्थित थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अगर आपके प्रश्न बनते हैं तो आप भी पूछेंगे, तो आपको भी टाइम दिया जाएगा। अंतिम सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होगा। अंतिम सत्र तक हम सबको बैठना है, और बैठकर उस अंतिम सत्र में आपके जो विचार होंगे
वो सारे लिए जाएंगे एक एक से, और मैं तब तक स्वयं यहाँ पर बैठकर आपके बीच में बैठूंगा, शोभा जी भी यहाँ पर रहेंगे, और रहकर पूरी बात सुन के और हम यहाँ से उसके बाद में प्रस्थान यहाँ से करेंगे और आप सबसे मिलके भी निकलेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले टाइम के अंदर हमारे कृषि को आगे बढ़ाना है, और सीबीबीओ और एफपीओ की अपनी भूमिका निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि दूसरे जो मैंने यहाँ आने के बाद में मीटिंग्स कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे, और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि दूसरी जगह जो रीजनल की बैठकें हुई उससे यहाँ के जो सीबीबीओ उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं, एफपीओ भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमें अगर 300 मेंबर बना दिए तो हमें 3000 कैसे बनाने, 3000 मेंबर बना दिए तो हमें 30,000 मेंबर कैसे बनाने। हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा करना है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तब छोटे छोटे किसान मिलकर खुद अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, और तब जो हमारा देश का किसान है वो किसानी भी करेगा, कृषि भी करेगा, और खुद के प्रोडक्ट का बस पैकिंग करके, और वो जब अपने खुद का ब्रांडिंग करके और अपने खुद का वो ट्रेसिबिलिटी कोड और जो यूआर कोड लगाकर जब वो जाएंगे और उसके खुद का ब्रांड अपने एफपीओ का वर्ल्ड के दूसरे देशों के अंदर, जब वर्ल्ड के अंदर जाकर उनके नाम का लगेगा, और वहां से डायरेक्ट जब डिमांड होगी और वहां से ऑनलाइन जब डिमांड करेंगे उस खेत का हमें, उस एफपीओ का हमें प्रोडक्ट चाहिए, उस दिन में मुझे लगता है कि उस किसान को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि अमेरिका में बैठा कंज्यूमर है वो मेरे से डायरेक्ट संपर्क में है, और मेरे उत्पादन को यहां से जो मैंने उसकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग या प्रोसेसिंग करके भेजा है उसकी डिमांड मेरी है। कल में सब मिलें और अपने इस काम को आगे बढ़ाएं, और हमारे सबके सपने और प्रधानमंत्री जी के जो विजन है और सपने हैं उसको हम पूरा आगे बढ़ाएंगे, और किसानों की इनकम बढ़ाने में हम सबका योगदान हो। इसलिए आज की ये रीजनल बैठक रखी है, और अगली जो बैठक होगी वो पुनः 2 महीने बाद में अपन नए स्थान के साथ में पुनः मिलेंगे, और अभी आप सबके सुझाव भी मिलेंगे, आपके प्रेजेंटेशन भी मिलेंगे, निश्चित रूप से उनको हम सब सुनेंगे, और आप सबके यहाँ पर उपस्थित होने पर मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हम सब मिलकर अपने कृषि और किसानों को आगे बढ़ाएं, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much. Honorable Minister has put it across to all of us that we should be seated till the end of the session. After the lunch break, all of you will get an opportunity to put across your punch of problems with FPOs, with CBBOs to FPOs. So that is the session which Honorable Minister is looking forward to. So he has requested you to stay till the end and then present your points. The points to be taken by Government of India, they are here to take them and then also give you solutions to that. Thank you, Honorable Minister, sir. May I request Honorable Minister of State, Sushri Shobha Karandlaje, Madam, to kindly address us. Madam. आज का ये रीजनल कॉन्फ्रेंस में उपस्थित बहुत दूर से आए हुए कैलाश चौधरी जी, ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಯಾದ BC ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी एंड FPO एंड CBBO को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हमारे ऑफिसर विजयलक्ष्मी जी, कर्नाटक राज्यದ हार्टिकल्चर सेक्रेटरी ಆಗಿರುವಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟಾರಿ ಜಿ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಆಲೂರ್ ಅವರೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ನಂದಿನಿ ಅವರೇ, all my officials from Government of India, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, the representatives from CBBOs and FPOs from different part of Telangana, Andhra, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka.
ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಭಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳದ ಸಭಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು CBBOs FPOs ಬಂದಿರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಓವರಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. உனக்கலையில் என்னக்கை பேர் తమిళనాడు చేరుకోరుకారు? తమిళనాడు. ఓకే. మీరు ఎంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఉన్నారు? ఓకే, గుడ్ నంబర్. ನಿನ್ನತ್ಲಿ ಎತ್ರ ಪೇರ್ ಕೇರಳತ್ಲಿ నేను? How many of you are from Kerala? Okay. Lakshadweep, you are presenting here? Okay. You are alone. Puducherry, no. No, I think. No one has come. Puducherry? No. Puducherry is one, huh? Okay. Telangana? Telangana, okay. Good. I think why Prime Minister thought of FPOs? Why is very much about तो FPOs करना ही है, इसका मन में आया. क्यों आया? It's only because India is dominating by small and marginal farmers. हमारे देश में छोटा किसान ज़्यादा है. छोटा किसान क्या करते हैं अभी? चुप है. बहुत सारे छोटा किसान, small farmers they are silent because वो खेती नहीं कर सकते हैं. ಅವರು ಉಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಕೋಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. कौन कौन सिटी का नजदीक है छोटा फार्मर्स, वो उसका पूरा का पूरा खेती लेआउट हो रही है. अभी किसान का बेटे सोच रहे हैं सिटी जाना ही अच्छा है. कैलाश जी बताए अभी सिटी जाना ही अच्छा है. खेती करने से कोई फायदा नहीं है. इट्स नॉट प्रॉफिटेबल. दैट्स व्हाई वी विल शिफ्ट टू अर्बन. एक अटेंडर का काम दे दो आएंगे, कुछ छोटा छोटा काम दे दो आएंगे. बहुत लोग सिक्योरिटी काम के लिए आए हैं, छोटे किसान का बच्चे. इसीलिए प्रधानमंत्री का मन में था इतना बड़ा आबादी है, इतना तो इट इज ए बिग पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू एनकरेज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. हाउ टू एनकरेज? उसको खेती में वापस कैसे लाना? इसको खेती में वापस लाना है इसको मदद करने से. इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने सोचा FPO बना दो. छोटा छोटा किसान को साथ में लाओ एंड साथ में काम करो, साथ में बिजनेस प्लान बनाओ, साथ में खेती करो, साथ में आगे बढ़ो. इसी कारण से FPO के बारे में सोचा. केवल FPO के बारे, CBBO के बारे में हम नहीं सोचे हैं. छोटा किसानों को अभी किसान सम्मान योजना का निधि मिल रहे हैं 6,000. बड़ा किसान के लिए छोटा होती है, एंड छोटा किसान के लिए 6,000 बड़ा है. वो बीज खरीद सकते हैं, वो फर्टिलाइजर खरीद सकते हैं. इसके अकाउंट में कुछ पैसा आए, कुछ खेती के बारे में सोच सकते हैं. इसका वजह से हम तो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा हम रेनफेड एरिया है. बारिश को हम निर्बंध है, बारिश को वेट करते हैं हम हमारे किसान.
इसलिए फसल बीमा योजना को सभी को मिलाना। वो फसल बीमा योजना दो तरीके से है, आपको पता है, वेदर बेस्ड है एंड फसल बीमा है। वो सब किसान तक पहुंचना है, इसके बारे में हम सोचा। कृषि सिंचाई योजना करना, हर ड्रॉप तो क्रॉप के लिए हर ड्रॉप को हम यूज करना। मिट्टी का परीक्षा करवाना, हमारे मिट्टी में क्या है। मनुष्य तो हम डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं, परीक्षा करवाते हैं, मिट्टी का कोई परीक्षा नहीं करवाते थे। मिट्टी को क्या डालना है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, हमको पता ही नहीं था। इसीलिए मिट्टी का परीक्षा करवाना, ये पूरे प्रधानमंत्री जी ने सोचे हैं किसान को आगे लेके जाने के लिए। एक केवल एक बयान नहीं दिया है, डबल द फार्मर्स इनकम, ये केवल बयान नहीं है, इसका पीछे बहुत काम करने का कोशिश प्रधानमंत्री जी ने किया। मैंने बताया हम कोई अभी बुल्लक काट नहीं रखते हैं, पहले हम खेती इसी से करवाते थे। अभी मैकेनाइजेशन को भी हम मदद देने को काम किया, मैकेनाइजेशन का बैंक बनाया। मैकेनाइजेशन कोई खरीदना चाहते हैं, इसको हम सब्सिडी दिया। अभी सीड का किट हम प्रधानमंत्री जी का सोच है, हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, अभी सरप्लस है देश में। कई राज्यों में बाढ़ का कारण, कई राज्यों में सूखा का कारण, वो तो सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनेगा। फिर भी लास्ट 2 इयर्स में, अगले 2 साल में हमारे देश सरप्लस उगाया है। प्रोडक्शन तो किया है, हम प्रोडक्शन को क्या करना, हमारे प्रोडक्शन हमारा प्लेट में आना, नहीं तो मार्केट में जाना, हम किसी को खिलाना। हम सब मन में रखना, हम क्या उगाते हैं, हम क्या खाते हैं, वो प्लेट में भी वेस्ट नहीं होना, खेती में भी नहीं वेस्ट होना, एंड मार्केट में भी नहीं वेस्ट होना। वो तो रोटन नहीं होना, बर्बाद नहीं होना। इसके लिए अभी हमारे डिपार्टमेंट सोचे हैं, प्रधानमंत्री सोचे हैं, एफपीओ बनाओ, सीबीबीओ बनाओ। हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में जाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, हम कैसे करेंगे। हमारे बच्चों को अभी प्रोडक्शन का बात अच्छा नहीं लगता है। हमारे नौजवानों को हम जाओ खेती में काम करो, कितना लोग करेंगे कितना लोग नहीं करेंगे। वो तो कोरोना के समय में बहुत लोग वापस गए, खेती किया। बहुत नौजवानों को बीई पढ़ा है, वो तो एलएलबी पढ़ा है, वो बीकॉम पढ़ा है, बीएससी पढ़ा है, इसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको हम बात कर रहे हैं, आप एग्री बिजनेस करो, एग्री मार्केटिंग करो, एग्री एक्सपोर्ट करो। You have to send your production to market. You have to think about export. You have to think about food processing. हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में रोटन नहीं होना, बर्बाद नहीं होना, इसका सोचो। हम सोचने के लिए हम बैठे हैं। अब सीबीबीओ का, एफपीओ का क्या दायित्व है। ये छोटा किसान है, एफपीओ का भी छोटे किसानों का एक ग्रुप है। उसका दायित्व क्या है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है उसको दिलवाना। किसान सम्मान योजना सभी को मिला है क्या, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, वो तो इंश्योरेंस किया है क्या, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, केसीसी मिल रहा है क्या, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मैकेनाइजेशन का वो तो हेल्प ले रहे हैं क्या, वो गांव में वो केंद्र में नहीं है क्या।
कृषि सिंचाई का कुछ मदद लिया है क्या, सोचे है क्या, पानी को हम सेव करें? वो तो बहुत साइंटिस्ट बताते हैं नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉर वाटर, तीसरे विश्व युद्ध हुआ है तो इसको पानी के बारे में ही होती है, ऐसा साइंटिस्ट बताते हैं। क्योंकि हमारे पानी नीचे जा रहे हैं, पानी कम हो रहे हैं हमारे फील्ड में। इसके बारे में क्या हमारा प्लान है? बहुत साल पहले हमारे गांव, हमारे तालुका, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑयल सीड में सेल्फ सफिशिएंट था। हर गांव में एक, इसको क्या बताते हैं, ಗಾಣ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಗಾಣ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, अभी नहीं है। अभी हम पैकेट ऑयल के लिए निर्भर है, वो तो पूरा का पूरा पैकेट में आना, पैकेट में खाना। ये पैकेट में क्या होती है इसको पता किया है क्या? इसी में 80% ऑफ द ऑयल पामोलिन है, ग्राउंड नट का ब्रांड है, सनफ्लावर का ब्रांड है। एंड मैं तो कोकोनट ऑयल खाने वाली हूँ, इसीलिए मैं ठीक हूँ। 100% कोकोनट ऑयल खाती हूँ, मैं नारियल का तेल खाती हूँ। आप क्या खाते हैं मार्केट से लेके, वो तो 100% नहीं है। इसी में हम पामोलिन मिक्स करते हैं। क्यों? पहले कर्नाटक में 13 लाख एकड़ में हम क्या उगाते थे? सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट उगाते थे। अभी नहीं है, अभी केवल 3 लाख एकड़ तक आया है। सही है ना? इतना अंतर आया है। ऐसे तमिलनाडु भी है, ऐसे आंध्रा भी है, ऐसे तेलंगाना भी है, ऐसे केरल भी है। केरल में तो नारियल का तेल खाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का सोच है, हम किसी में आत्मनिर्भर नहीं है, किसी में हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आत्मनिर्भर करना, दाल में हम आत्मनिर्भर होना, एडिबल ऑयल में हम आत्मनिर्भर होना। आंध्र का मंत्री आए थे परसों हमारे डिपार्टमेंट को, उन्हें बताया केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है वो तो पामोलिन बनाने का। हम तो ग्राउंड नट का ऑयल ही खाना, सूर्य तो सनफ्लावर का ऑयल ही खाना, वो तो पूरा का पूरा देश को सप्लाई करने को अभी उगाने का बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? पामोलिन का सीड लगाओ, पामोलिन का तो पेड़ उगाओ, ऐसे हमने बताया। नॉर्थ ईस्ट को कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे किधर हम उगा सकते हैं, इसका वेदर है उधर हम उगा सकते हैं। वो तो मंत्री आए थे, उन्होंने बताया ये साल में वो 2 लाख एकड़ में पामोलिन का पेड़ डाल रहे हैं, वो तो सीड डाल रहे हैं। ऐसा हम कुछ सोच सकते हैं क्या? हमारे एफपीओ में बैठ के हम क्या उगाने से हमको मार्केट मिल सकता है, क्या उगाने से हमको प्रॉफिट मिल सकता है? हम तो उगाए, वो तो पूरा का पूरा रास्ते में गए। इधर हमारा कोलार है, कोलार में बहुत सारे लोग टोमेटो उगाते हैं, वो तो पूरा का पूरा बिकते नहीं है, रास्ते में आती है एंड प्रोटेस्ट होती है। ऐसे नहीं करना। हम क्या उगाते हैं वो मार्केट में जाना, हम खाना नहीं तो मार्केट में जाना। 2 ही ऑप्शन है। मार्केट है इंटरनल मार्केट एंड एक्सटर्नल मार्केट। इंटरनल मार्केट हमारे देश में मार्केट में जाना, नहीं तो एक्सपोर्ट होना। एक्सपोर्ट होने के लिए क्या कैसे उगाना? अभी प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं, जैविक फार्मिंग के बारे में बता रहे हैं। क्यों इतना इसको फोकस दे रहे हैं? इतना फोकस दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे देश हम क्या कैसे उगाते हैं ऐसे नहीं खाते हैं। पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बारे में हम सोचना, पेस्टिसाइड कम डालना। ऐसे रेसिड्यू हर देश में रेसिड्यू का पैरामीटर अलग अलग होती है, इसीलिए वो देश को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना पेस्टिसाइड डालने से वो खाते हैं,
इसका बारे में सोच के हम उगाने का प्लानिंग करना, ये हम करना है। अभी एफपीओ, अभी सीबीबीओ आप क्या वापस जाके हमारा किसानों को मिलते हैं, हम एक्सपोर्ट करने वाला चीज को उगाने के लिए सोचने का प्लानिंग करना। मैंने बेंगलुरु में एक वो तो ऑर्गेनिक सेल करते हैं ना, ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स सेल होती है, उधर गई थी। क्या क्या ऑर्गेनिक का नाम पे आते हैं, वो तो ऑर्गेनिक का नाम पे नहीं, ऑर्गेनिक है, हम समझो ऑर्गेनिक है। 1 घंटे में पूरा का पूरा बिक्री होती है, 1 घंटे में कुछ बचती नहीं है उधर। मैं भी गई थी सब्जी लेने के लिए, हमारा मेरी घर का सामने ही है, वो बता रहे 1 घंटे में पूरा बिकता है इधर। लाइक इतना डिमांड है, सो मच डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स। कैन वी प्लान फॉर दैट? अभी चिकबल्लापुर कोलार का बीच में हम बैठे हैं, नजदीक है चिकबल्लापुर कोलार, बारिश नहीं है उधर। इतना कष्ट उठा के वो तो उगाते हैं, एंड टोमेटो उगाते हैं, रास्ते में आते हैं। क्यों? आप अच्छा विदाउट पेस्टिसाइड, कम पेस्टिसाइड से, पेस्टिसाइड के रेसिड्यू का मापदंड रख के आप उगाए तो हम किधर भी इसको बेच सकते हैं। आपका आम को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को बेचने का, वो तो मैंने अपेड़ा को बताया, हमारे ऑफिसर से, हमारे बीसी पाटिल इधर है। हर स्टेट में एक प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट करने का दायित्व किसका है? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का नहीं। मैंने तो कटारिया जीते मीटिंग में सब थे, उसी दिन मैंने बताया, वो तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का एक्सपोर्ट करते हैं हर स्टेट में। इसका ज्यादा से ज्यादा मन में होती है आईटी का एक्सपोर्ट करो, बीटी का एक्सपोर्ट करो, कंप्यूटर का एक्सपोर्ट करो। इसके एक्सपोर्ट के बारे में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सोचते हैं। वो क्यों सोचे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के एक्सपोर्ट करो? ये बहुत मुश्किल का काम है, पेरिशेबल गुड्स है। इसीलिए मैंने हर स्टेट में, मैंने किधर किधर गई, मैं तेलंगाना में मीटिंग की, कर्नाटका में मीटिंग की, ऐसे कौन सा स्टेट में मैंने मीटिंग की। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बताए हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए सेपरेट सेल बना दो। अभी कर्नाटका में इसका पूरा प्लानिंग हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसका बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने के लिए हर स्टेट में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में एक सेल क्रिएट करना, नहीं तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को सेपरेट एक एक्सपोर्ट प्लानिंग बनाना हम डिपार्टमेंट में। एपेडे का साथ जुड़ना, डीजीएफटी के साथ जुड़ना। एपेडा तो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए एपेडा का साथ ही स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को जोड़ने से हम ज्यादा से ज्यादा इसको मदद देने का काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने ज्यादा बोलने का नहीं, सब टेक्निकल इश्यूज को विजय लक्ष्मी जी ने बताए हैं, एंड कैलाश जी भी बहुत सारे विषय रखा है। मैंने आपको एक ही विनंती करती हूँ, ये सीबीबीओ कौन कौन बैठे हैं, आप एफओ का हैंड होल्ड करिए, इसको मदद दीजिए, एंड एफओ वापस जाके किसानों को हैंड होल्ड कीजिए, किसानों का साथ बैठिए। हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? आपके साथ 300 किसान है, वी हैव गॉट 300 किसान, 300 फार्मर्स आपका एफपीओ का कंपनी में है, किसी के साथ 1000 है, किसी के साथ 500 है। ये 500 मिलके हम क्या उगा सकते हैं, क्या एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा चीज बेच सकते हैं, इसके बारे में आप प्लानिंग करना, इसके बारे में आप सोचना। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल्पिंग इन ऑल लेवल्स, ऐसा सारे योजना है, एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को आप यूज कर सकते हैं आपका वेयर हाउस बनाने के लिए, आपका कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, आप फूड का टेस्टिंग लैब बनाने के लिए, मिट्टी का टेस्टिंग बनाने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने के लिए, पॉली हाउस बनाने के लिए, इतना सारे
सारे काम करने के लिए आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के यूज कर सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, बहुत सारे राज्य, बहुत सारे जिला, मैंने आपको, मेरे मंत्री को भी मैंने ऑफिशियल्स, ऑल ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज आपका जिला का एग्रीकल्चरल प्लानिंग बनाइए। डीएपी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान बनाना है आरकेवी स्कीम में। आपका जिला में क्या चाहिए, कितना वेयर हाउस चाहिए, कितना कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कितना टेस्टिंग लैब चाहिए, कितना मिट्टी के टेस्टिंग किट चाहिए, इसको डीएपी बनाते हैं। डीएपी एसएपीएम ही होते हैं, स्टेट का कमेटी में होती है। स्टेट कमेटी पूरा का पूरा आपका स्टेट का प्लान बना के दिल्ली में भेज सकते हैं। दिल्ली आरकेवी स्कीम में उसको मदद हम करेंगे। मैंने देख रही थी कितना जिला डीएपी बनाया है। आपका जिला का आवश्यकता क्या, व्हाट यू वांट इन योर डिस्ट्रिक्ट, you want warehouse, you want cold storage, you are testing lab, what you want, इसका आधार पर आप डीएपी बनाना, आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लानिंग बनाना, उसको आप स्टेट का, वो तो चीफ सेक्रेटरी का नेतृत्व में एक कमेटी है, उधर बैठ के दिल्ली भेजना, आपको हम मदद कर सकते हैं। बहुत सारे जिला नहीं बनाई, बहुत सारे जिला। इसीलिए मैंने हमारे अधिकारियों को विनती करती हूँ, जल्दी से जल्दी आप प्लानिंग बनाइए। आपका जिला को क्या चाहिए, कैसे हम मदद लेंगे। बहुत सारे निजी क्षेत्र वाले आना चाहते हैं, अभी प्राइवेट कंपनीज दे वांट टू कम टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन ओडीओपी स्कीम। ओडीओपी स्कीम में बहुत सारे निजी क्षेत्र वाले आने चाहते हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। आरकेवी स्कीम को यूज करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को यूज कर सकते हैं। इसको प्लानिंग बनाने का मदद तो हमारे ऑफिसर्स करना, हम जैसे पॉलिटिशियंस करना, एंड सीबीबीओ से प्लीज यू स्टडी ऑल दिस एंड हेल्प योर FPOs. That's all. I think we spoke so much about our this conference, and आप नेक्स्ट सेशन में भाग में लेना। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका क्या क्या कंस्ट्रेंट है, आपका समस्या क्या है, फील्ड में काम करने वाले आप हैं, फील्ड में काम करते करते आपको क्या समस्या आ रही है, इसको भी बात करने का एक सेशन है। इसीलिए मैं तो मुझे लग रहा है, मैंने पहले ही बताई, आप हम खा सकते हैं, हमको वी हैव टू राइट टू ईट बट वी डोंट हैव राइट टू वेस्ट। ये हम मन में रखना, हमारा प्लेट में भी वेस्ट नहीं करना, हमारा मार्केट एंड खेती में भी वेस्ट नहीं करना, इसका मन में रख के हम आगे जाना है। इसलिए तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है। आपका हर स्टेट में अलग अलग योजना है। आंध्रा में रैता बंधु केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है, एंड तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इज थिंकिंग अबाउट स्मॉल कोल्ड स्टोरेजेस, दैट्स आल्सो I think it's very good, and Karnataka government is thinking something else for farmers. They are really helping them, and only thing we have to put together, we have to go forward, and इसीलिए FPOs का सोच प्रधानमंत्री जी का मन में आया। प्रधानमंत्री जी ये सोच के पीछे बहुत इसका एक्सपीरियंस है, वो तो गुजरात में इसको साधन करके दिखा के वो ऐसा बयान दिया है, डबल द फार्मर्स इनकम। डबल द फार्मर्स इनकम कब होती है, हम क्या उगाते हैं उसको मार्केट मिलवाना, मार्केट मिलने से ही हमारा डबल द फार्मर इनकम होती है। इसका मन में रख के हम आगे जाएंगे, जरूर आपके साथ हम हैं। हम अभी आपका बात भी सुनेंगे, आप क्या क्या बोलने वाले हैं, आपका कंस्ट्रेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या आती है काम करने के समय, उसको भी हम सुनेंगे। सुन के क्या केंद्र सरकार से चाहिए आपको, केंद्र सरकार का मदद क्या चाहिए आपको, जरूर हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। कुछ पार्टी का बैरियर छोड़ के अभी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, वो उधर कौन सा स्टेट में कौन सा सरकार है ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं। हर सरकार को, हर स्टेट को हम मदद कर रहे हैं। हर स्टेट आगे जाने से पूरा देश आगे जाते हैं, नहीं तो
एक आंड वीक हुआ तो पूरा शरीर वीक ही होती है। इसीलिए सबको हम मदद करना है, सब स्टेट को मदद करना है, सब स्टेट को हैंड होल्ड करना है। हैंड होल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है। आप CBBO FPO को हैंड होल्ड कीजिए, FPO किसान का हैंड होल्ड कीजिए, इसी से हम देश को आगे बढ़े सके। इसलिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत दूर से आप आए हैं। ये सेशन आपके लिए अच्छा होना, इसी से कुछ आप लेके जाना, वापस जाने के समय कुछ लेके जाना, इसके लिए ये सेशन रखे हैं, हम कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कई समय में हम आपका स्टेट में आएंगे, जरूर। मैं तेलंगाना आई थी, अभी आंध्र आना है, तमिलनाडु आना है, जरूर हम आएंगे। तो नेक्स्ट मंथ मेरा प्रवास केरल में भी है, केरल में भी बैठेंगे। आप कब भी हमारे पास आ सकते हैं, दिल्ली में आ सकते हैं, बेंगलुरु में आ सकते हैं। हम किधर प्रवास आते हैं उसी समय मिल सकते हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं, जरूर इसको सुलझाने के लिए हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, बोलो भारत माता की जय जवान। जोर से बोलिए ना, जोराಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸರಿ, जय जवान, जय जवान। नमस्कार। Thank you, madam. Thank you so much. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ. Gave us a lot of energy to this conference and also to the business plans. Whichever FPOs have succeeded, it may not be an exaggeration to say that their business plans have been absolutely wonderful, on the dot, on the spot, and therefore they succeeded. Unless the business plans are absolutely implemented, FPOs may not really take the flight. They may not fly, they may not be able to export. So here is the forum where you can say, what is holding you back? CBBOs are there, farmers are there. Madam ji was very, very explicit. CBBOs are to help FPO, FPOs are to help farmers. आपको क्या चाहिए? कमी क्या है? What is the shortcoming that you are facing? Honorable ministers are here, officers are here. We will take a look at the short video about the 10,000 FPOs project. After that, we will also let you know, you will also witness lots of presentations about what's going on. May we have the short video on the 10,000 FPOs, please? जब एक हाथ से कई हाथ मिलते हैं तो हम अनेक से एक बनते हैं। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक ऐसा संगठन जिसमें वो खेती से लेकर उपज को बेचने तक साथ मिलकर काम करते हैं। एक गांव में एक जैसी फसल उगाने वाले 15 से 20 किसान अपना समूह बनाते हैं। किसानों के ऐसे कई समूहों से एक FPO बनता है। कृषि क्षेत्र को मजबूत और हमारे मेहनती किसानों को समृद्ध बनाने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की नींव रखी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होने का उनका सपना भी साकार हो रहा है। यहाँ देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। FPO से न केवल किसानों की मोल भाव की क्षमता बढ़ती है, बल्कि खाद, बीज, परिवहन, भंडारण आदि की लागत में भी कमी आती है। FPO के माध्यम से किसान दूसरे बाजारों के साथ साथ ई-नाम मंडियों में भी अपनी उपज को सुविधापूर्वक बेच रहे हैं। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। इस योजना में एक ब्लॉक एक FPO को लक्ष्य बनाकर विशेष FPOs जैसे शहद, जैविक उत्पाद, बांस, तिलहन, कृषि वानिकी आदि का भी गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए कई एजेंसियां कार्यरत हैं। क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन यानी CBBO इन FPO को 5 वर्ष तक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, क्रेडिट लिंकेज, अकाउंटिंग और ऑनलाइन बाजार से संबंधित प्रशिक्षण और सुविधाएं मुहैया कराता है। इस योजना में FPO को 15 लाख रुपए तक का पूंजी अनुदान
और बिना किसी सिक्योरिटी के 2 करोड़ रुपए तक का लोन देने के लिए भारत सरकार द्वारा बैंकों को गारंटी देने का प्रावधान है। इसके साथ ही एफपीओ के संचालन के लिए 3 वर्ष तक 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 1.25 लाख किसानों को 14 करोड़ रुपए का दिया गया पूंजी अनुदान एफपीओ के मिशन को और मजबूती देगा और उनके व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। सभी किसान भाई बहन भारत सरकार की इस क्रांतिकारी और ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बने और एफपीओ से जुड़कर एक उन्नत भविष्य की ओर बढ़े। Thank you. You witnessed the beautiful concept of 10,000 FPOs. That's wonderful. Now, we are already past 2 years. What have we done? What was the target? Where are we? What has happened? And here is National Project Management Agency, NPMA. This looks at all this progress, whatever progress details and reports that you share with the central agency. All this is put together, and we have Mr. Vikash Sinha, team leader from NPMA, who will present us the scheme progress in southern region states. Mr. Vikash Sinha. And we have requested him to not stick to the PPTs, instead speak extempo to the precise points, since we are running behind by more than 70 minutes. Mr. Vikash Sinha, please. Thank you. I'll try and be as brief as possible. Honorable Ministers of State for Agriculture, Government of India, Shri Kailash Chaudhary ji, Srimati Shobha Karandale ji, Honorable Minister for Agriculture, Government of Karnataka, Shri B.C. Patil ji, dignitaries on the dais, representatives from state and central government departments, implementing agencies, CBBOs and FPOs. On behalf of the National Project Management Agency, I'll briefly present the progress scorecard of southern states, 5 southern states and 2 union territories under the 10,000 FPO scheme. Next slide, please. So if we look at the numbers for allotment, registration, and number of shareholders mobilized within these 5 states and 2 union territories, almost 17% of the total allocation has been made to these 7 states and union territories. Out of 4,966 FPOs allocated, 858 are in these 5 states and 2 union territories. Out of those, 591 has been registered, which is 20% of the overall registration within the country. But if we look at the number of shareholders which have been mobilized, so almost 200 shareholders has been mobilized as against the target of 300 shareholders per FPO. This is somewhere where we are lagging in terms of shareholder mobilization, but it's still comparatively better than many of the other states that we have covered so far. Talking about the equity grant preparedness within these states, out of the 351, we have almost released 120 FPOs equity grants so far, and we are ready for 231 FPOs are ready for equity grant release. Only the documentation is incomplete. If we focus on that, we'll be able to release equity grant for 231 FPOs. Next slide, please. Here is the progress scorecard of Andhra Pradesh. If we look at here, 159 FPOs were allotted and 109 have been registered. So again, overall, I have seen that across these 5 states and 2 union territories, 70% registration has taken place, mostly from the allocation made in financial year 2021. But 21-22, there are certain areas wherein the registration has not taken place, and mostly because of... जो पूरे रजिस्टर्ड हुए ना उनकी संख्या कितनी है 300 प्लस कितने हैं आपको टोटल कितने दिए हैं Total we have 858 allocation 591 registration को छोड़ो 33,000 से प्लस कितने हैं 300 से प्लस कितने हैं मुझे 351 जी तो बहुत कम है 600 में से 351 आपको इनको पूछो कि कितना टाइम हो गया इनको दिए हुए 1 साल हो चुका है
1 साल होने के बावजूद भी अगर ये 300 मेंबर नहीं बना सकते तो फिर भविष्य में ये कैसे, 2 साल बाद में तो इनका काम कार्यकाल पूरा होने वाला है, फिर किसको हैंड होल्डिंग करेंगे ये, फिर किसको ये दे, किस लिए ये कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। आपके पास में 800 लोग, 850 है ना, ये 858। 50% से भी नीचे आपका काम है। मैं तब तक उसको पूरा नहीं मानता जब तक आपके 300 मेंबर नहीं बन जाते और तब तक वो एफपीओ पूरे संचालन की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपको इक्विटी ग्रांट नहीं मिलेगा जब तक आपके 300 मेंबर नहीं बने। जी 50% से नीचे काम, ये मैं संतुष्ट नहीं हूं और इस तरह से काम नहीं चलेगा। और स्पष्ट जो सीबीबीओ सुन ले, आज अगले 2 महीने बाद में रीजनल मीटिंग जो होगी उससे पहले ग्राउंड पर जाकर किसानों के बीच में जाकर जो हमारे चेयरमैन हैं उन चेयरमैनों से जाकर मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, हमारे जो सांसद हैं उनसे मिले, विधायकों से मिले, या कोई और जो दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले, जाकर उनसे चर्चा करें और उनसे कहिए हमारे मेंबर बनाइए। आपके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे लोग, इसलिए नहीं करेंगे कि पीछे की कंपनियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, कुछ कंपनियां पैसे लेके भाग जाती है, उसकी वजह से किसान उस पर भरोसा नहीं करता और 2000 रुपए नहीं देता है। इसलिए आप वहां के लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं या ऐसे जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। मुझे इतने सीबीबीओ, कितने हाथ खड़े करो सीबीबीओ, जितने भी टोटल सीबीबीओ, आप में से कितने लोग हैं जो सांसद से मिले, लोकल सांसद जो एमपी है उससे मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है ये? आप क्या वो सांसद है वो किसान नहीं है? वहां का विधायक वो क्या फार्मर नहीं है? कैसे काम आगे बढ़ेगा? ऐसे नहीं चलेगा भाई। आपको अगर काम करना है तो ईमानदारी के साथ भी कीजिए, जनता के पास में जो जनप्रतिनिधि है उनसे मिलिए, ऐसे कई संगठन भी है, राजनीतिक संगठन है, उनसे जाकर संपर्क कीजिए। सिर्फ हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास करने से विजन पूरा नहीं होगा। और आप भी है ना इसके ऊपर मीटिंग स्वयं लें, मुझे पता नहीं, मैं 2 महीने बाद में जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर जिसके भी अगर ये पूरे नहीं होंगे वो अपनी आगे के लिए बोरियां बिस्तर तैयार रखे, हमारे कोई काम करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ताली बजा सकते हैं जिसको अच्छा लगा है, कोई रोकने वाला नहीं है। ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं चलेगा भैया। चलो आगे बढ़ो। So state-wise, if you look at Andhra Pradesh, these are the most major pressing challenges. So out of 51, 51 FPOs, the DMC is pending. Then only 34 FPOs have reported appointment of CEO and 70 have reported appointment of accountants out of 109. Now, as we know, appointment of CEO and accountants are very, very important. These are not only important from the point of view of implementation, but also from the point of view of adhering to the scheme guidelines and accessing any kind of benefits under the scheme. It's very, very important to have those. And if we don't have those appointments ready, then we will struggle to adhering to the guidelines. Then again, 39 FPOs are currently potentially ready for release of equity grant. And the average number of shareholders per FPO is only 154. So as Honorable Minister was speaking right now, the number needs to be increased, and we need to work closely to increase the number of shareholders per FPOs to at least reach the 300 threshold that we have, so that they are eligible for accessing equity grant and other benefits under the scheme. Next slide, please. Karnataka had the highest number of allocations among the 5 states and 2 union territories, and here the number of registration is also the highest, 186. Again, if we look at the number of shareholders, almost 200 shareholders per FPO is the current status, which needs to improve. Next slide, please. So yeah, so in case of Karnataka, 35 DMCs approvals are pending, and out of the overall registration of 186 FPOs,
Only 104 have appointed CEO and 32 have appointed accountants. So again, there is a huge gap in terms of number of appointment of CEO and accountants in this case as well. Highest number of FPOs potentially ready for equity grant release are from Karnataka, 96 overall. Yeah, and comparatively, here the number of shareholders per FPO is highest, 277, as against other states. Next slide, please. In Kerala, total allotment, if you can see, it's 82, against which 43 have been registered. So approximately only 50% of the FPOs have been registered so far. And shareholders numbers, if we look at, again, it's only about 100, 110 shareholders per FPO, which is very, very low. Next slide, please. So in case of Kerala, 20 DMC approvals are pending, due to which the FPOs have not been registered in 20 cases. And if we look at number of appointments of FPOs, CEO and accountants, 16 cases are there in which CEOs are there, and only 4 accountants are there. Again, number of CEO accountants are very, very low. And 8 FPOs are potentially ready from the state of Kerala for equity grant release. Next slide, please. Anybody from the state of Kerala? State government department? प्रेस करो, दबाओ, नहीं दबाओ, प्रेस करके रखो, हाँ. Securities, and there were some conflict of interest because as per the Cooperative Society Act, there cannot be more than 1 or 2 similar societies with No, here is the problem. One is about registration. Yes. Problem about the registration you are telling, corporate, under cooperative. yes. You can register under Companies Act also. And sir, Kailash is asking about why the numbers in FPOs are less. It should be more than 300 members. Why it is less? Yes, madam, we are trying to get more numbers, but we are given some instruction to CBOs and the field level officers to join more number of people, more number of farmers. From how many years you are trying for this? Total how many FPOs in your state? Actually, we have got 82 targets are there. So we are almost registered 34 as of now, and the others are in registration process. FPO director, you are the FPO director there? No, Who is looking after? Looking after that SFSC. No, you just let me know the problem. Why you are not registering more than 300 people? Yes, we have to register 300, more than 300. Then only we will get government facilities. Sure, ma'am. We are given instructions. Otherwise, these farmers will also leave. They are also left away, no? Okay, ma'am. We are given instructions also. Yesterday also there was a meeting, and we are given instructions to the officials to register more number of farmers into the FPOs. Yeah, more number of FPOs per block, 1 FPO, and you can have special FPOs also. Depends on the production. Some jackfruit FPO, some ginger FPO, some flower FPO, like that. Yes, ma'am. 1 block 1 is compulsory. Yes. No, Vijayalakshmi. 1 block 1 FPO is compulsory. In that 300 members should be there. Okay, ma'am. Okay. Then you can form some special FPOs also. Sure. Including these, not excluding this. Sure, ma'am. 1 block 1 FPO plus special FPOs. Sure, ma'am. Yeah. So Special ko seema nahi hai. Like special FPOs, you can do it in outside block also. Okay, ma'am. In the whole district also you can do one for ODOP scheme also. 8 FAs are ready for taking equity. Yeah, you please concentrate. You tell your officers to register more farmers to the FPO. Sure. Okay. Thank you, sir. It applies to all states.
आई एम टेलिंग ओनली अबाउट केरला. केरला का उठे है, बाकी ऑफिसर्स को अप्लाई होती है. You have to register your FPOs immediately. The target you have to reach, and also more than 300 farmers should be there in a FPO. Otherwise, you are not getting the government benefits. Then these farmers also will go away. That's why please take care of this. Okay, all the Andhra Pradesh, who is the officer? Andhra Pradesh, no. Oh. Telangana. Telangana. Okay. Pondicherry. Pondicherry, who is the officer? Who is representing? Tamil Nadu? Okay. You are doing this, no? Okay. Karnataka? Who is looking after? Okay. Here also the problem is there. You are still not registered the companies and also. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ FPOs ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲಸಿನಹಣ್ಣಿನವರು ಮಾಡಿದವರು ನಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಮಾಡಿದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಕಾಪು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ FPOs ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓತೋ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ and also for jasmine. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್. Thank you, ma'am. So the problems that we face related to shareholder mobilization is that if there is a certain amount of gap when you start mobilization, and then there is a gap and then again you reach out, the farmers who share equity contribution in the first go, they feel that they are not able to get any benefits from the FPOs because there is a constant amount of delay. Unless they are able to generate equity, they are able to generate capital, they are not able to do any business, and they are not able to provide any benefits to the farmers. So even after equity contribution, they feel left out. So it's important to complete the equity collection from farmers in one go so as to ensure that they are able to receive benefits. The second thing also is that the 300 is the minimum threshold. So for FPOs which were allocated in the year of financial year of 2021, the number should be closer to 750, which is actually the amount of limit under which the equity grant benefits can be availed. So 2,000 rupees per farmer members. So that means we should be closer to 700, 750 so that they are able to receive the maximum amount available to each FPO. But we are very, very far away from those numbers. So now moving on to Tamil Nadu, if we look at 229 is the total allotment and 146 is the registration. Again, 76 DMC is pending over here. And if we look at registration of shareholders, 20,620 shareholders have been registered so far, which is again low. Can we move to the next slide? So 141 is the average number of shareholders that has been registered under each of the FPOs in Tamil Nadu. And again, here also the CEO and accountant appointment is quite low. Only 75 FPOs have reported CEOs and 53 accountants. And as I mentioned, without them, it's difficult to carry out FPO operations as business. Next slide, please. Yeah, moving on to Telangana, here the allotment overall is 138 and 104 has been registered. So relatively better performance overall registration. And if you look at the number of shareholder farmers, it's 26,451. So again, number of shareholders per FPO is relatively better. Next slide, please. And 22 cases are there where DMC approvals are pending. And in terms of CEO appointment and accountant appointment, again here it also big gap. 24 FPOs are having CEOs and only 13 accountants so far. Now, FPO and CEO accountant appointment is almost everywhere lagging, and one of the reasons could be non-availability of funds or challenges in documentation or anything. So if there are any such cases in which the FPOs are not able to receive FPO management cost, or CVBOs are facing any challenges in receiving CVBO cost, kindly write to us so that we are able to resolve that.
In case of Puducherry also, 3 allotments are there and 2 registration has happened. So here also number of shareholders are 60, which is closer to 320, 330 shareholders per farmer, which is what is required. Thank you so much. Thank you, Mr. Vikash Sinha. And you, all of us have heard what is expected out of us from both the ministers. They have made it very clear, the way forward. And next is presentation by CBBO on regional innovations. And the first one is FPO formation and promotion by Mr. Suresh Babu, State Head FPOs, Center for Innovation in Science and Social Action, CISA. Do we have Mr. Suresh Babu? Mr. Suresh Babu? Mrs. Suresh Babu? Ayana? Yeah, please come. And like you have heard, Honorable Ministers, kindly keep it straight and precise. Respected dais, our fellow CBBOs, the FPO representatives, and dear friends. This is a presentation or a general presentation on the FPO, Farmer Producer Organization. Within that frame, I will take the least time to say what are all innovations we have done in this matter. Though the presentation says on a general framework, I will be concentrating on the efforts made by us in this direction. CISA, the Center for Innovation in Science and Social Action, has got 14 FPOs during the year 2021 and 21-22. We have registered 6 FPOs that were allotted to us during the year 2021. And of the 8 FPOs allotted to us during 21-22, we have already completed 5 FPOs registration. I think let's just skip this slide. Coming to the purpose of the, as we have understood about the purpose of the farmer producer organization, we see the farmer producer organization as a social institution. So we are trying to mobilize the farmers to the maximum. Even during the initial phase, we have made volunteers to work for us in each and every villages and the blocks in specific. And the rapport with the line departments were also assured by means of interaction with the departmental heads at the district level and also with the NABARD people, so that we can say that we have received all the DMC approvals for the 14 FPOs we have been granted. Coming to the farmer registration, we are proud to say that of the 6 FPOs we have registered during the year 2021, we have a shareholders number of 2,800, and during January of this year, we have received about 41 lakhs as equity grant. That means all the FPOs we have received during 2021 have got the first installment of the equity grant sanctioned by the Government of India. And during our farmer interaction, we are making sure that the panchayat level meetings are being conducted by us in each and every panchayat of the blocks which were allotted to us. And during the basic survey format itself, we are making sure that the declaration from the farmers, whether they are willing to join the FPO or not, is being obtained, so that we can finalize the potential shareholders at that level. I am proud to say that during the second year, that is the 21-22, of the 8 FPOs we have been allotted,
Till now, 5 have been registered, and the rest of the 3 registrations are pending. But though it is pending, we have already identified 2,400 farmers. That is the basic requirement for applying to the equity grant. And I can say that in this year itself, or by June itself, we will be applying for the second years or the FPOs that have been allotted to us. There is 8 FPOs. Equity grant application will be submitted in this month itself, because we have already submitted the DPR or the feasibility study reports for the new 8 FPOs, and the business plan for the 18 months are being under preparation. And I think this is a general one. And coming to the input supply, third one, the input supply, our innovations or intervention made are in the form of, we have got a rapport with the almost all the major players in the field, that is the dealers and the manufacturers we have already contacted. And 2 of the main players in the field of this seed production and also in the field of the chemical fertilizers and pesticides, they have joined hand with us, and they are in the way of supporting us to a larger extent. And coming to the previous slide, please. Coming to the financial and credit scenario, we can say that our FPOs have been asked to register as agents for the insurance program, and they are at the PMFPY program and the restructured weather-based crop insurance program. We have already given training programs to the FPOs and the CEOs and the board of directors. And coming to the market linkage, we are yet to finalize those programs, but I think we will be able to do that in the month of June itself. And the training and networking, and we have done a lot of trainings, right from that of the SMAM, submission on agriculture mechanization, we have done training. And in the case of handhold training, we have in collaboration with the Government of Kerala agencies, we have done programs with the RTTC, that is the Regional Technology Training Center, that is Trivandrum, gave hands-on training to our farmers to that extent. Then coming to the state government, the portal, the AIMS portal, we have ensured that all our shareholders are being enrolled into that program. Then also a lot of training programs. There is this SHM program, State Horticulture Mission programs. We had training programs with the officials of the SHM wing. Then SPAM I have already. Then with the CTCRA, there is a Central Tuber Crop Research Institute also has extended their training programs to our FPOs. Coming to the business plan, for the year 2021, we have already submitted the business plan for the 6 FPOs that were granted to us during the year 2021. And we have already submitted those 2. And the governance program, on the governance part of the FPOs, we have made sure that the different committees are being constituted at the FPO level, and the task has been assigned to each and every board of directors, so that will work to in a better manner. And at the FIG level, which is the architecture of the FPO goes, no, next one, please. Okay. And coming to the FIG level meetings, FIGs have been formed, even for the newer FPOs that were allotted to us in the 2021 year. We have already formed the FIGs at the grassroots level, and the net plan format has been issued. That was there in the earlier NABARD programs, which we have modified to an extent. And we are in the process of collecting the net plan, that is the individual plan for each and every shareholder, to see that after 2 to 3 years, what will be their achievement in this direction. To end up, I may say that the initial focus, the FPO formation I have already told. The next one, please. The last one. Yes, this is the general one, so we can go to the last one. And expected outcomes and all, I think we visualize that, as almost all the dignitaries have told us, we visualize that it is the need of the hour to have a strong social institution at the grassroots level, with which only we can have a commercialization of the agriculture
and the agriculture community can be brought forward only by means of such a strong social institution, and we are in the process of transforming our farming community to come under one umbrella or the other in the form of FPOs. Thank you. Thank you. I thank the organizers for giving an opportunity to CISA, comparatively a smaller organization when compared to other CBBOs, an opportunity here to present these things. I once again thank each and every one of you for the patient listening. Thank you. Thank you, sir. May I invite Dr. E. Vadivelu? Yeah, he is coming. Business plan formulation and execution. He is the project officer FPOs, Erode Precision Farm Producer Community. Sir, if you would like to look at the slides and speak, maybe you can have this cardless and then continue instead of this. Not necessary, sir. Honorable Minister of Agriculture, Government of India, dignitaries on the dais, and fellow CBBOs and FPOs from southern states. Let me share my experience of innovations in the preparation of the business plan. First slide, please. There are two takeaways from this slide. One is whether process is important or product is important. So the product means the business plan can be prepared by any consultant, somebody outside the FPO ecosystem, and that can be thrusted on the FPO. Other way, the process means involving the FIGs, involving the board of directors into the business plan development process, and then get it done. So in this case, the FPO will own the business plan and try to execute by tooth and nail. The second point, in the value chain, now the farmer and FPOs are in the production phase only. In the whole of the supply chain, aggregator, processor, marketer, exporter, retailer in the supply chain, the farmer and FPO are not there. So our focus must be the business plan should strengthen the FPO to play many role in the supply chain. Apart from the producer, the FPO will have to become the aggregator, FPO will have to become the processor, exporter, value adder, and till the retailer. So these are the two key issues we have introduced in our business plan preparation system. Next slide. So the strategies, so scouting, how to scout the business ideas. So here, in a cluster, we throw questions like, what are all the resources available, what are all the raw material available that can be processed and supplied to rest of the regions. On the other hand, what are all the things demanded in this cluster, then how best we can mobilize it from the different regions and then bring it as a business. Then third, look at the successful business of the cluster, who are all doing what kind of business. So from there, we'll have to make them to scout the business ideas. So this is how it flows. In this process, we don't discriminate. Then it is brought to the FPO the board platform. In the board, things are brainstormed, pros and cons are discussed, and SCBBO we facilitate to eliminate. So that it's a process to understand the different elements of the business plan. So when you involve the FIGs and BODs, more number of active farmers will be on the higher side, and more number of enterprising board of directors will be on the higher side. So in the course of the process, we are strengthening the skills of the BODs and FIGs. And then, next slide, please. Next slide. Say, FIG meeting, FIG clusters, 15 FIGs, you call the FIG executives, 3 from each, and have a discussion. Or within the FIG, we can have a discussion at cluster level. So in that is the kind of preparation for the agrarian society into business society. So the CBBOs, the major challenge we face in the field is
So psychologically, they are producers over the generations. To transit them onto business domain, that is the psychological challenge. That overnight it's not happening. So for every day, in every activity, if the FIGs and the VODs are involved, only then the percentage of active farmers and percentage of enterprising board of directors can be increased, then finally it leads to success. So during the brainstorming, we allow the board of directors to discuss any way they like. Then finally, we guide them to, by elimination process, we remove one by one, then finally get into 1 or 2 or 3. Again, that is prioritized. Which one is first, which one is second, depending upon the financial budget available with us. So that is how we go. Next slide, please. So here comes the technical input. Either direct data or from the secondary data, we need to analyze the existing supply chain and current competitors. Who are all, suppose if we go with 1 or 2 products, then who are all the current competitors, that information. And then the market intelligence and market data we provide to the board of directors and the CEOs. So all this, then visit to the some successful FPOs or successful industries. So that they can have a hands-on experience on how to move with a business or how to get along with the business. Next slide, please. Say, before set down to writing the program by the CEO, so the basic data, unit cost for everything will have to be worked out and kept it ready as a ready reckoner. So unless this is done, while working out a budget, the budget will have to be scaled up, budget will have to be downsized. Unless we have the basic data worked out and it is ready on the table, it won't be difficult. It will be difficult to finalize the business plan. Next slide. Say here, FPOs are not supposed to have a joint venture with the private limited company or public limited company, but FPOs among them, they can go with joint venture. So in course of time, the FPOs are going to be federated at district level or state level and at national level. This federated structure may be on a commodity basis, maybe coconut, maybe tapioca, maybe mango, something like that. So in that way, if the higher financial size is required for a business, then few FPOs can join together and form a joint venture or consortium like thing and then get on with the business plan. And second, what is out of sight from many of the board of directors is only FPOs alone can do the business but not the FIG. That is not so. FIGs also can undertake a business and they can go along with FEC, company and FIG, they can enter into an MOU with different models. 100% company invest and the FIG is a working partner. 100% FIG invests and company is working partner. And both are investing equally, 50-50, so the benefit is shared. So in that way, out of 15 FIGs, minimum 5 FIGs, if we involve in the business, then the visibility becomes too much. In the press and public, we can reach very fast. So along with the business of the company, we need to think about some business for FIGs. FIGs can be, so in the label you can put manufactured by FIG, marketed by the company. So that way we can go. Next slide. So these are all the technical terminologies. The farmers are finding it difficult to assimilate, the board of directors are finding it difficult to assimilate to begin with. But in course of time, when experts are, services are availed, and then interaction sessions are arranged with expertise people from the different sectors, then slowly their skill on business is improved. The next slide. So the ecosystem. So we manufacture, then how to transit the logistics. The logistics is the biggest problem for right now. All FPOs are in the pilot business stage. When they are in the final, the first pilot business stage,
the cost of marketing and the cost of logistics, it is too big for them to chew. So here, the CBBO's intervention and government's intervention to create, identify and give them the target market and distribution strategy and associated services, and then team building, collective purchase of inputs, collective purchase of collective marketing, so experience sharing among the FIGs. So this kind of ecosystem we'll have to create so that they imbibe the skill automatically. Next slide. Hello. Fast karo. Say, many of the FPOs who availed credit during the pilot business stage, they are killed. So that is why we advise you develop sufficient skill in the pilot business. Only when you go for scaled up business, avail the finance. This suggestion we used to give. And next slide. This final slide, sir. Next. कितनी slide है? Say the economic और parameters. कितनी slide है? Pardon? और कितनी slide है? So the economic parameters. Last two. Next. So this is a very important slide, sir. Say, why a business plan fails? See, the lack of entrepreneurial skill. Out of 10 BODs, if 3 or more BODs are enterprising, then that FEC gets into the business very easily. If 1 or 2, then that FEC suffers. That skill we need to go. Then psychological barrier to take risk. So risk and profit goes together. So farming community generally undertakes, feels that others' money we are using. If we lose the money, then in the community, my name will gone. So that way, the risk-taking ability, another element we need to look into. And lack of expertise in the digital market. So the physical market, they have some experience, but in the digital market, say the government should support and CBBO will have to support to get into ENAM or NEML or NCDX, that kind of platform, and then app-based marketing, we need to go long thrust, sir. Thank you for the opportunities. Thank you. Thank you, sir. You spoke of the ideal situation and what should happen. Every point was right. But okay, we invite Dr. Sangappa. Sir, are you here? Yeah, coming up. He is on market access, inputs and outputs. He is scientist, agri-extension, Indian Institute of Millet Research, IIMR. May I request you to kindly stick to the innovation part, sir. Would you like a mic and face this way? No. Would you? Check. Hello, check. Hello. So very good afternoon all. Respected Minister on the dais, dignitaries on the dais, and off the dais, my fellow CBBOs. Friends, I am Sangappa from ICR, Indian Institute of Millet Research. Empaneled as a CBBO with SFEC, NABARD, NCDC, and Government of Karnataka, that is Watershed Development Department. So I'll be talking on the market innovations here and how we are working for the markets of the produce, whatever the produce we are getting at this FPO level. So first of all, we are building the confidence with the FPO members as the FPO will be the one-stop solution for all the activities related to the agriculture. Like it has become the rural extension center. So we are trying with the capacity building programs, so this one connecting them to the market, connecting them to the ICR KVKs at the local level and the ICR institutes for the technologies, whatever irrespective of the produce. Next please. So here the one of the scheme, that is the Raitasiri program, which can be a replicable model in other states as well. So this is the production linked incentives for the farmers who get about 4,000 rupees per acre who grow the millets. So as we work on the mainly priority to the millets and other commodities as well. So we are trying to link with that scheme. So farmers are getting the incentives and up to the 10,000 rupees for the hectare. So in this scenario, the farmers are trusting us when we are doing the GPS survey and connecting them to this DBT scheme. So they are getting the confidence and they are getting the market as well through our institute. So we have the startups as well at our institute.
So next please. So that is, next thing is the MSP procurement center. One of our FPO has become the MSP procurement center recently. That is the Annagiri FPO formed under the WDD help. So here they are increasing the transaction. Based on the turnover, we are connecting them to the NAPCONs or the other agriculture infrastructure funds and all. So this is the strategy to increase our business transaction or the business turnover. So in the last season, our FPO, that is Annagiri FPO of the WDD, Government of Karnataka has done more than the 1.35 crores transaction through this business. Next, please. So SWAM, that is the small mechanization, the submission and agriculture mechanization. The smallholders, the madam was talking about the SWAM program. So when we connect the smallholders with the mechanization through these machinery banks, especially this is being run under the central level, and the FPOs which are having at the state, we have connected them to this SWAM program. So successfully they are giving the machineries part, farm machineries and the processing machineries to the smallholder. So automatically the farmers are coming to the FPO for their marketing purpose. So this is one of the criteria we can follow up or we can add into our list. Next please. So millet processing center. So friends, as you are aware that the primary processing, that is the dehulling of the millets, is very much important to market the millets to the consumers. So the lack of availability of the millet primary processing centers at the farm gate, so the farmers are getting very less price, that is 25-30 rupees per kg. But when the same farmers get the opportunity to process the millets and sell with the brand and all, absolutely they will get up to the 80 to 100 rupees, depend upon the cities. If it is in Bangalore, almost the price is more than the 100 rupees. So similarly, such the small things, means small processing units, not only for the millets, even for the other pulses or the other horticultural commodities, can play an important role to connect to the small and marginal farmer. So this is the one of the story from the SFSC promoted or the SFSC funded FPO, that is Hulsur FPO from the Karnataka state. Yes, please. So this is another things which we can connect the farmers or the FPOs to the other facilities, because farmers want different kind of their requirement, like you can say the RTCs, you can say the Aadhaar updation, you can say the PAN card, or the updation of the eKYC also to get the Pradhan Mantri Samman Nidhi. So Kisan Samman Nidhi. So such kinds also we require a common center which can provide the services. So CSC is the one where we are proposing for all the FPOs. Already one of our FPO has got this one, and the other FPOs are also getting this facility through the common service center. Here we can provide more than 750 services through digital media to the farmers. So automatically this will become the business center for the FPOs as well, and the farmers, they will get the services. So absolutely a game-changing scenario. So we can connect our FPOs to the CSC centers, and the FPO can become a business hub. Next, please. So this is the replicable millets value chain which our institute, ICR, Indian Institute of Millet Research, Hyderabad, has developed, and we are trying to replicate this one in all the FPOs. So we, as we at the FPO level, we aggregate the farmers at the first stage, and then we'll make them as FIGs, those who grow the different commodities like the jowar, bajra, or the other small millets. After that, we are developing the products, value-added products, means whatever may be. It may be the jowar-based pasta, or the vermicelli, or the pulses-related things. So those things will be tested in the lab, and we are entering into the market through the different promotional activities. So ultimately, consumer has to be satisfied. So how? Because when he get the commodity or the processed product at affordable price and with the tasty and the nutrition, so automatically the consumer will come towards the FPO. So local, so the vocal for the local play a very important role here. So we are processing and making the value-added products at the farm gates. Next, please. So this is a complete holistic approach from our CBBO side, so that we can add the different services, business activities, or the business promotional things at our FPO level. So one of the FPOs, or from our side, you can see that starting from the farm inputs till the marketing accessibility, we are trying to help our CBBO FPOs through the different media. Next, please. So this is the, we have started our FPOs movement in the recently through the WDD, SFSC and all. So after the registration, within a period of 4 months, so we come out with some of the validated products from the
FPO. So this is from the WDD funded FPO of the Dharwad district, which has come out with the, see, you can see that the jaggery, of course, every day we require oil, yes, of course we require every day, and some of the biofertilizers, and as well as important to see that one, so home or havanal kind of the things we require even the bharani, we call the cow dung cake. So this FPO has started business on selling the cow dung cakes also through the business, through our FPOs with the branded, that is Annadatta brand. So there are many avenues to increase the business of the FPO. So this is one of the opportunity or the option for us to say that vocal for the local. Next please. So hub and spoke model of the FPOs, of course many of our CBV fellows knows this one. So we have the 2 FPOs at the Andhra Pradesh and the Telangana. One is working exclusively on the mango, another one is the spices and all at the Andhra Pradesh. So in this model we are aggregating the produce at the FIG level, that's turmeric, pepper and all at the Andhra Pradesh, and mango at the Telangana. So this model is helping us to aggregate the produce and linking them to the market. Next please. So I was talking about the primary processing of the millets. So this is not only important for the millets, even for the other pulses and all. So friends, when we add such kind of the processing unit at the farm gate, like which requires minimum investment, like the 3 to 5 lakh rupees, which we establish this one, the grading will happen at the farm gate, destoning will happen, and also we can process that one, whatever the consumer expect the produce. So such kind of the models will really nurture the FPO and also will increase the business turnover of that FPO. So friends, this is recently we have submitted a proposal to our WDD Commissioner sir is here for the establishment of the primary processing units to each of the FPOs, so that they can process the millets, they can process the pulses at the farm gate, and they can pack it 1 kg or the 5 kgs model, and they can directly connect to the consumers at the better price. Consumer get the produce at the affordable prices, and farmers will increase their income. So we have submitted, so if we get the opportunity to get this project and establish the millet primary processing unit at the farm gate, and really it will be a game changer, as we are going to celebrate the International Year of Millets in the next year. So we will be the Vishwaguru in the millet sector at the global. Next please. So we are happy to inform you that one of the FPO has got Best FPO Award in presence of our Honorable Minister Madam Shobha Madam, and from the CM, Honorable CM Karnataka. So we have received this Best FPO Award as well because of the turnover, because of the business transaction. So when we are committed for the business transaction and the empowerment of the farmer, definitely we will get all our FPOs will be getting the award in the different occasions. Next please. So with this one, I end up my presentation by saying that agriculture does not end up with our harvest. We require a lot of the efforts to make this agriculture as a business, and we are going to celebrate International Year of Millets. You can join hands with us so that the millets millets are the good for the farmers, environment, as well as the business. So what I say here is that to achieve the nutritional security, what Minister sir was talking morning, so millets can play a very important role. Jai Hind, thank you so much for the opportunity. Probably the line to remember, millets are good for the farmer, millets are good to the person who consumes, millets are good for the society. Thank you very much. We have next presentation by Mr. Sridhar Ishwaran, Head of Institution and Capacity Building in Samunnati on Sustainable FPO Ecosystem. Sir, are you here? Yeah, please come, sir. Robust agri-value chain and ease in agri-finance. You have to please excuse me for asking you to really speed up and also cut 7 minutes. Sir, he says 7 minutes. हेलो नहीं, सर कुछ बात इस कर रहे हैं. प्रेजेंटेशन के बाद में लंच है सर. ये प्रेजेंटेशन है, इसके बाद में तुरंत Is Mr. Kunjapu here? Mr. Kunjapu इसे here? पूछ लेते हैं एक बार. 1 घंटा बैठने की कैपेसिटी है. लंच कितने बजे चाहते हैं, अब अभी या 1 घंटा बाद चलेगा ना? ठीक है, ओके. Mr. Kunjapu, are you here? Mr. Kunjapu, FPO. बाहर चाय है,
एक एक जाके पी के आ सकते हैं, सभी साथ में नहीं जाना, नो छुट्टी, Mr. Bharat, छुट्टी नहीं है, are you here? एक एक जाके एक एक आ सकते हैं. Sorry, ma'am. Sorry. Mr. Kunjapu, Mr. Bharat, Mr. Jyoti VM, are you people here? FPO presentations. You are all to speak on behalf of FPOs. Are you here? आप हैं क्या इधर? Mr. Umesh? Bharat? No, just be with us here. Mr. Kunjapu, are you here? Are you here? Kunjapu? Do you hear me? Kunjapu, ilidira nevo. Okay, the first presentation is Mr. Kunjapu. If he is not there, then we'll go to Mr. Bharat. Okay, sorry. Come, sir, please. Mr. Sridhar Ishwaran. Respected dignitaries on the dais, close friends, Sridhar Ishwaran from Samunnati. Samunnati is a Sanskrit word, Sam and Unnati, collective growth, collective prosperity, collective elevation. Samunnati is a non-banking finance company focused only in the agriculture value chain. Next slide, please. So one of the mission of Samunnati is to make markets work for smallholder farmers. Today's session is for FPOs and smallholder farmers. Samunnati's mission is for making markets work for them. And we have three pillars. One is basically we provide finance. Second, we also enable commerce and market linkage. Third, we also enable technology for the entire ecosystem. Next, please. We are present in 22 states, and we are connected almost with 1,500 plus farmer producer organization. And since inception, in the last 4 years, Samunnati has given loan to the extent of 650 crores to farmer producer organization. And one of the key points which I wanted to talk about here is, many of the nascent FPOs, especially all the CBBOs are here, many of these nascent FPOs, which are 1 to 2 years, they need access to finance to start up some activity. So Samunnati has developed an entire digitization link, and we call it as an FPO IPL, instant pre-approved loan, wherein an FPO can get anywhere between 3 lakh to 5 lakh rupees in less than a week. Everything is online. So all the CBBOs are requested, you can get in touch with our respective state heads and get the benefit out of it. And this is meant only for nascent FPOs because they need time to scale, but immediately they need to support their member farmers. So this Samunnati instant pre-approved loan will definitely be of handy to all of you. Next. We work in the entire value chain, and if you see here, farmer producer organization are there at the center. Because if you see the FPO, they also support the smallholder farmers, both on the input and the output side. And that is a mission of even Samunnati. So for Samunnati, FPO is an important asset class, and we believe the next decade is going to be only FPOs. Next. Now if you see here, the smallholder farmers in the complex agri-system, right? He has to depend on an input supplier, he has to go to a bank for a finance, he has to go to a mandi or a trader for some of the produce that he wants to sell. What Samunnati has done is we have connected a digital connector. We have built a digital connector. Next slide, please. So if you see, we have kept farmer at the center, and we have kept the farmer is either connected to a trader or farmer is part of an FPO. And we have brought in all the services what is needed for the FPO and the smallholder farmer. For example, if it is inputs, we are connected with a lot of input manufacturers. Similarly, on the output side, we are able to connect the FPOs to many of the traders, aggregators, the institutional buyers of commodities, the processors. And if you look at some of the advisory services what the FPO and the smallholder farms wants, we are able to provide them, like how to prepare a business plan, how to give them training on legal compliance, how to take care of the governance, roles and responsibilities of the board of directors. These are all non-financial in nature, but Samunnati really brings it to the FPO. So Kailash Chandji also spoke about startups and some of the technologies. So Samunnati, as part of our technology mission, we also connect with a lot of ecosystem players. And if you find best of the technology available, we take it to the member farmers. Recently, we did a drone for 2 states, close to 1,000 acres, and it was well appreciated by the FPOs and the smallholder farmers. So like this, many of the technology which is available, Madam spoke about soil testing, we connect with all those tech companies and we bring it to the FPO, and through the FPO, it is given to the smallholder farmers. Next slide, please. So for the farmers, this slide is very important. We support them on access to finance. We give them anywhere between a 5 lakh and go up to 1 crore of rupees. And many of the mature FPOs, if they wanted to get into a processing, Samunnati also give them a catalytic infrastructure loan.
So that is very important. We are able to do a lot of capacity building. As I mentioned, Samunnati has a framework called AMLA, Aggregation, Market Linkage, Advisory. So this framework is deployed at the FPO, and we are able to give all the services that the FPO needs. Similarly, on the market linkage, as we spoke, we are able to connect the FPOs to the mainstream markets because Samunnati is working in the demand side of the business, and we have a lot of processors and institutional buyers of commodities as part of our clientele. Next slide, please. So this slide already spoke. This is the framework we talk about, aggregation. Every FPO does aggregation, and for that they need working capital. So Samunnati gives the aggregation model. Market linkage we do. Advisory services is important. Then only the FPO can scale. Next slide, please. Yeah, three things important. We do the initial assessment of the FPO. Then we start engaging with the FPO. And very important is over a period of 1 to 2 years, based on the connection and the engagement between Samunnati and the FPO, we also do the achievement in terms of whether the FPO is profitable, whether the FPO is able to do good turnover, whether the FPO is able to connect with the mainstream markets, whether the member participation has increased, whether it has been active. So these are some of the measures that we look at the FPO. Objective is to make the FPO financially viable and scalable. Next slide, please. Yeah, there are three important drivers. One is definitely we have to look at the cost of cultivation of the smallholder farmers comes down. Second, we have to measure the productivity drivers, whether the income has gone up, whether the yield has gone up, because the package of practices, the technology, what we bring in, that really adds value. So that's what is Samunnati's main motto, to see that the productivity drivers are measured and the income of the farmer goes up. Last but not the least, unless and until the FPO members are not active, it is not possible for you to scale. So it is always important for CBPO and the FPOs to see that the member farmers are active, they do more transactions with the FPO, then only the FPO will be able to scale, they will be viable and sustainable. Next. Next, this is the grading tool that we have developed, which we will deploy at each and every FPO. Next. As part of our technology initiatives, many of the FPOs, they have either a chartered accountant who supports them on the financials, or they are dependent on their own manual register or an Excel. We have inbuilt a digitization tool that we deploy at the FPO so that all the FPO can do the transaction with their member farmers digitally so that it is transparent, it is recorded. FPO knows very clearly what price they have bought the commodities, and even the farmer knows what price he has sold or what inputs he has bought. So we have developed this entire digitization model, and also we have done the KYM, the business management solutions, so that the FPOs are able to do all the transactions in a transparent manner, plus they are able to take care of their financials. They can depend on the chartered accountant only to do the audited financials. Next. That's it. Before I end, I just wanted to tell you something. All the CBBOs who are present over here, look at Samunnati as a partner, because the moment we talk to a couple of CBBOs and FPOs, they feel we are like a competitor. No, we are not a competitor. Rather, we would like to work more with the CBBOs and provide them with all the services which is already available, and you should take the benefit out of it. And so, like, you know, how we are connected with the entire ecosystem, we want CBP also to realize that Samunnati is there to support the FPO in the nascent stage right up to the maturity level. So you can count on us as a partner and see that whatever support that you want, you can take it from us. And like, finally, I will just say the mission of Samunnati is to make markets work for smallholder farmers. All the CBBOs and FPOs, your mission is also more or less the same. So together, let us make it happen. Thank you. Thank you, sir. You were fast and saved a lot of time for us. Thank you very much on that. Still, you made the point. This is the time Honorable Minister was waiting to hear you, listen to you. And these are the FPO presentations. Do we have the first presentation ready of Malabar Farmer Producer Community? If you are ready, I'll invite Ms. Nimisha, and the implementing agency is SFAC. Nimisha. She is speaking in a forum for the first time, so please give her a big hand and welcome. Respected Honorable Minister and all other dignitaries present in the stage, I am representing Malabar Farmer Producer Company from Kerala under SFAC. Our company was registered last year on 6th of April 2021. Even though our company started its journey at the peak time of COVID, we could easily maintain the proper functioning of our company
by making use of various online mediums for our weekly meetings. Our mobilization program started after the district committee meeting held on April 2021. With the collective effort of our CBBO and our board of directors, we could easily mobilize our shareholders. As of now, within 1 year, we have over 1,400 shareholders. And last year, we applied for our first set of equity grant for 500 members and received 10 lakh equity grant on this January 2022. As I've told, we have over 1,400 shareholders. We have formed over 40 farmer interest groups within our area, and the process by which we mobilized our farmers were by conducting mobilization campaigns focusing on different areas, and our board of directors have played a major role in conducting these mobilization campaigns along with our CBBO. Coming to the business activities of our FPO, the main value chain crop identified in our FPO was coconut, because the Malabar region is the largest coconut producing belt in Kerala. So the main value chain crop is coconut. So our aim is to make maximum profit out of one coconut. So for that, we have applied for a 50 lakh grant from MSME through SFAC Kerala for high value addition of coconut products like coconut chips, cool drinks, desiccated coconut, etc. And also another one of the main raw material from coconut is coir, and we came across a scheme of coir board of 5 crore scheme, and we have applied for that 5 crore scheme, and we have successfully submitted our scorecard, and we have secured 76% marks in that, which makes us eligible for that scheme. So these two are regarding our main focus projects that we are aiming to fulfill in the coming future. And coming to the present business activities that our FPO has done so far within this 1 year, we have purchased farm machineries through SMAM scheme with 80% subsidy for each machineries like power tiller and other farm machineries which will be useful for the farmers. And these machineries are available for custom hiring at a low rental rate for the farmers. And also we have already started with the trading business of coconut. And as a first step, we have traded almost 2,000 coconuts to a local buyer. And in the coming future, in the coming months, we are planning to increase it into multiple folds. And we have set up different collection points for coconut in our area. And as of now, we have over 1 lakh capacity, 1 lakh nuts capacity. And if a buyer approaches us, we are equipped for that. And another one of the achievement that I have to tell is about our FPO has acquired 3 acres of land with the collective help of the farmers to set up our processing units that we are doing with MSME and coir board. And so this will be like a processing center of processing of farm produce by the farmer, produce in their own land. So this land will be owned by the FPO itself, and we aim to produce export quality materials and make maximum use out of this coconut, so that the coconut farmers will be benefited from this. So, and to increase the income of our FPO in the coming future. Thank you. Nice presentation. Thank you very much. Sir will interact probably a little later after listening to these people. So next is Hulsoor Mahila Kisan Millets Producer Company Limited. Implementing agency is FCVC, and person speaking is Mr. Ashok. Mr. Ashok? Please come. Respected ministers and dignitaries on the dais, I am representing here Hulsoor Mahila Kisan Millets Producer Company, located in Bidar district. Actually, it is a millet-based FPO, sir, involving more than 308 women farmers. And firstly, in the beginning, हमने क्या किया मतलब हर गांव को जाके मिलेट्स के बारे में हम उनको अवेयरनेस किया. Why means we need to increase the nutrition security.
क्या मिलेट So, क्या मिलेट उगा रहे हो ಫಾಕ್ಸ್ಟೇಲ್ ಮಿಲೆಟ್ और लिटिल मिलेट नवणे मत्ते रागी ಅಂತ नवणे मत्ते सामे ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ सर कंगनी बोल के बोलते हैं हम उसको। और हर गांव को हम कैसा मतलब किए बोले तो एक गाड़ी लेके वो गाड़ी के ऊपर सब एडवर्टाइजमेंट करके हर गांव को हम जाके वहाँ पे अवेयरनेस किए। क्यों बोले तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा एरिया सोयाबीन उगाते हैं, तो हमारा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SFAC है और CVO इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है। तो मिलेट बेस्ड CVO रहने से with the help of Indian Institute of Millet Research we have established primary processing unit. So starting हम उनको अवेयरनेस देने के बाद with the help of IMR we have distributed free seeds, क्योंकि फार्मर्स आगे आए तो उसके बाद जब हम मिलेट्स सीड्स दे चुके हैं तो उसके बाद उन्हें सोचते कि हम उगाने के बाद कहाँ पे देना हो, सो दे नीड ए प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसके बाद हम क्या किए, प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो अभी क्या है, हम जो फार्मर्स से है 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ केजी हम लेते हैं, जब उसको प्रोसेस करते हैं व्हेन यू प्रोसेस इट एटलीस्ट विल सेल इट टू 65-70 रुपीज़। तो जो वैल्यू एडिशन लेबलिंग से जो मार्केट किधर है आपका? मार्केटिंग करे सर मैडम। ना बीदर में मार्केट है, आप हैदराबाद भेज रहे हैं, किधर भेज रहे हैं? बीदर है और हैदराबाद भेजे, एक बार बेंगलुरु भेजे है, तो ऐसा मार्केटिंग कर रहे हैं उसका मैडम। इसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वी हैव गॉट अंडर स्वैम स्कीम, बोले तो मशीनरी बैंक के स्कीम में हमको सब्सिडी में एक ट्रैक्टर और इक्विपमेंट्स भी मिल चुके हैं, तो उसका भी अभी सर्विसेज स्टार्ट किए हम। इसके साथ ही साथ अभी जो प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही साथ सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट जो आटा है, रागी का आटा है, इडली रवा है, इडली खिचड़ी है, तो मेनली वी आर फोकसिंग ऑन प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग भी हम कर चुके हैं आरोग्य मित्र बोल के। और रिसेंटली सर हम हुलसूर से 2 पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे हम आए थे दिल्ली में, जो दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पे भी हम आ चुके हैं सर। एंड इसके साथ ही साथ अभी ऑयल के ऊपर भी काम चल रहा है, जो वहाँ पे सैफ्लावर ऑयल बोले तो आप कुसुम बोलते हैं ना सर, करड़ी का तेल, तो उसका भी प्रोसेस करने का हम काम कर चुके हैं। सो टिल नाउ वी हैव रिसीव्ड 6,16,000 रुपीज़ इक्विटी ग्रांट, और इसके साथ ही साथ 60 लाख रुपीज़ तक हमारा बिजनेस टर्नओवर है सर। सो थैंक यू सो मच। हेलो सर, आपके CBBO कौन है? सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च अभी हमारे CBBO आपका ये पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना? हाँ सर, अभी मिनिस्टर से हमारा इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का जो कैंपेन IMR में हुआ था, सो जब हमको हुलसूर FPO का रजिस्ट्रेशन कॉपी भी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उन्होंने इश्यू किया था, तो वहाँ पे अप्रिशिएशन किया। अभी आपके जो मेंबर हैं और आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं क्या आप? कितना मेंबर? हाँ सर, जब कितने तक जाने का लक्ष्य है? सर अभी 308 मेंबर्स हम जो है ना, जब उनको सर्विस देते हैं हम, तो जब सर्विस देते तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं सर। अभी उनका कॉन्फिडेंस लेके और उनको मेंबर शेयर मेंबर ज़्यादा करने का हम सोच रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप जाकर अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि जाकर उनसे मिले किसानों से? हाँ सर, डेफिनेटली। हाँ सर, यहाँ पे आप स्लाइड्स CBBO साथ में रहते हैं आपके जुड़ने में, वहाँ कहने में, कहीं हाँ मीटिंग सर, वगैरह करने में? हर डिस्ट्रिक्ट में उनका बोले तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बोल के है सर, वो हमारे साथ आते हैं, हम काम करते हैं सर। ठीक है। अब ऐसा है ना, दूसरे जो CBBO वाले हैं ना, वो जो काम नहीं कर रहे हैं वो कृपया करके इनसे प्रेरणा लें कि CBBO की तारीफ कम ही करते हैं FPO वाले। ये इनके साथ में काम कर रहे हैं इसलिए इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए दूसरे भी जो CBBO है वो इसका थोड़ा ध्यान दें, जिनका काम अपना आकलन करें कि अपन खुद के अंदर ही कि हम कितने अंदर हैं और कितने बाहर हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। ताली बजाएं इनके लिए जोरदार। और ठीक है, बहुत अच्छा। Thank you, sir. Thank you so much. Next is Grama Samruddhi FPCL Parashala Trivandrum. Implementing agency is SFAC, and Ms. Jyoti VM will talk to you. Jyoti. Good afternoon, everyone. I am Jyoti, Chief Executive Officer of Grama Samruddhi Pharma Producer Company Limited, Parashala. Our company got incorporated on 29th July 2021. Also, major crops grown in our tract are fruits and vegetables, coconut and tapioca. And our cluster-based business organization is CISA, Center of Innovation for Science and Social Action. And then... आ गए क्या? इधर है? आपका CBBO है इधर? Yes, sir.
Center for CISA. Our project coordinator is there. And then, next slide. Our extraordinary general board meeting was held on 3rd October 2021. The meeting was inaugurated by Sri V. Muralidharan, Honorable Minister of State for External and Parliamentary Affairs of India. On this meeting, 302 shareholders participated. Distribution of share certificate and prominent farmers were felicitated. Next slide. And then training programs. Grama Samardhi Farmer Producer Company Limited conducted various training programs such as banana cultivation, weather-based crop insurance schemes, homestead farming, native Total, how many cow-based. farmers are there? Total, how many farmers? 342 farmers. 342. Yes. Native cow-based agripreneurship, improved technologies of tuber crops, post-harvesting of fruits and vegetables. These training programs were headed by agriculture officers, research scientists, and government officials belongs to Agriculture Department. And then next. Next, move on to our activities. Next slide. Next slide. In Kerala, during the festival season like Onam and Vishu, Grama Samardhi Farmer Producer Company Limited procured fruits and vegetables directly from shareholders and then distributed to 1,000 families belongs to Parashala block. Next slide. And then Which income you got in that? Yes, ma'am. How much income you could earn on that? We have turned about 2,50,000. Yes. And then next, our next activity is value addition of tubers, that is tapioca puppet. In Parashala block, the productivity of tapioca is high, so that an FIG group, that is 10 women entrepreneurs, started a sale of tapioca puppet. Grama Samardhi Farmer Producer Company will procure 2,000 puppets per week, and we are aiming to improve the number from 2,000 to 10,000 by August. Next, our next activity is vending cart. Under State Horticulture Mission Scheme, 5 shareholders from our company applied for vending carts, especially for selling fruits and vegetables. We are aiming to procure fruits and vegetables from our shareholders and transfer to this 5 farmers so that these 5 farmers will get their daily income through this vending cart. Next activity. Next is our upcoming activities. First one is coconut oil extraction. An FIG group of our company initiated to start coconut oil extraction unit. So this unit is, this FIG is also maintaining a native cow farm and also a crematorium unit. So the waste of this coconut oil extraction unit, that is coconut shell, is used for this crematorium unit, and then coconut cake is used for that native cow farm. So that is a triangle and integrated project. And then next slide. Next is our major upcoming activity, that is input center startup. Agri input centers like seeds, nurseries, fertilizers, and custom hiring center we are going to start. As of now, site selection, agreement signing, and panchayat license procedures are completed. And next slide. Next is exhibitions. We have participated more than 3 exhibitions till now, and we are exhibited our tapioca puppet and 15 banana varieties, which gives more recognition to our company. Next. Thank you. These are the major activities till date and yet to come. So as per the direction of our CBBO and implementing agency, our business activities can be improved to a great extent. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. CBBO is helping you. Yes, sir. Yeah, they are with you. Yes. Thank you. Uniform branding of FPOs is an initiative by Government of Karnataka. There is a contest. It has been launched to get a common logo, a trade name, and a tagline. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ FPOಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಲೋಗೋ, ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. This contest is launched by Government of Karnataka. It is launched on 8th of this month and it will be open till 11th of next month. We will see 1-minute video which tells us what is this, where to log in and what to do. May we have the video please? And participate, yes.
अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಕನಸು, ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚಿಂತನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋಗೋ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಣಿತರಿದ್ದಂಥವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೋಗೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. All this URL is shared with all the FPOs. It's available. It's widely available on the net. Kindly access, kindly participate, and also kindly win 2 lakh rupee. That is the prize money. Please participate. And it's a golden opportunity. Entire state of Karnataka will get one brand name, one tagline, and one logo for a product, which is great. Any product that goes out from Karnataka will carry it, and the value and the worth of Karnataka. Now let us break for lunch. It's right time, and we will assemble back at 2:15. 2:15. There are 4 counters. All things are set. Kindly have lunch. Kindly come back. The next 7 FPOs will present their details after the lunch. Please, let's take a break for lunch. Thank you very much for your patient hearing in the morning session. Let's come back at 2:15.
കേരളത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് മോഡിജിയുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് നൽകിയതെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഞങ്ങളും ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം എൻഡിൽ കിടക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ മോഡിജി അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ നൽകിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തികച്ചും അഭിമാനപൂരിതരാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. The name of the FPO is Malanadan Farmers Produce Company Limited and is located in Idukki district, Kerala. This FPO was allotted to us on March 26, 1921 and the company was incorporated on 1st June 2021. Some of the basic information about the FPO is presented here. Malanadan FPO is a special product FPO which is based in Nedungandam block in Idukki district. It is popularly known as land of spices. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഭാരതത്തിൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്ന സ്പൈസസിൻ്റെ 75% 75% of the spices are cultivated in Kerala. For the last century, many centuries, Kerala is famous for spices exports. The British, the Arabs, all are come to Kerala for buying spices of Kerala. So we are promoting a company that based on spices. The primary product of this company is spices. The FPO aims to improve the production of organic spices and spice market. We wish to bring the brand name Malanadan Spices into the lap of the world. Among the spices, cardamom, black pepper, clove, and nutmeg are focused on our commodities. Currently, the FPO has a total 360 shareholders. We have already availed an equity grant of 7,20,000 rupees. As per the business is concerned, they have just started trading of spices and act as a direct supply chain of few supermarkets in Kerala and North India. This is our brochure. The FPO collect raw material from its members and suppliers. It on need basis to customers. The first image shows the Malanadan FPO office spice. The next image are of their hygienically packed organic spices boxes. The next image shows their spices sales inaugural ceremony which took place in the presence of NAFED officials. Sri V.C. Simon, NAFED State Head Kerala, and Sri Vijay Raju, Nodal Officer Cochin. This slide depicts the grading of cardamom and black pepper being carried out in their office spice. Besides, they ran a spice stall in Lucknow during the National Cooperative Meet and got a sale of rupees 35,000 rupees. Fortunately, it was their turning point from where they got lots of inquiries regarding spice trading. Malanadan FPO provides a wide range of supporting programs for their farmers. For insurance, they organize the corporate insurance program.
under Spice Board of India and Agriculture Insurance Company of India Limited. For a local farmer, crop insurance is a boom to compensate farmers. Losses arising due to the crop failures caused by diseases or insect attacks. 45 farmers of Malanadan FPO got this opportunity. This slide depicts some of the machineries brought by Malanadan FPOs. Here we can see cardamom dryer, cardamom grading machine, cardamom color sorter, daily processing capacity of 1,000 kilograms. This clearly indicates that technological innovation of this company. By concluding my words, I am sure that through our assistance and their hard work, we can develop as a unique brand name Malanadan Spices. എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സഹായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ കമ്പനിക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mr. Jazz, Mr. Murli. I invite Lakshmi Narayana Swami Jainath, FED Farmer Producer Company. Implementing agency is NAFED, and Mr. Nikhil Reddy. First of all, I would like to thank you for everyone giving this opportunity. Myself, Nikhil Reddy, I am CEO of Lakshmi Narayan Swami Fed Farmer Produce Company Limited, and our CBBO is Grant Thought and Bharat LLP, implementing agency NAFED. We received equity grant of 1st January 2022, and our 500 farmers in our FPO, we will increase the farmers of list, and we started input business also. We received seed license and pesticide license, fertilizer license. We made 70 lakhs business within 1 year. Soybean seed, and our district is very short. Matlab, soybean seed is very come, sir. We're receiving seed from Madhya Pradesh and Maharashtra. So the problem is soybean seed. FPO produce the planning of marketing of soybean. I will do meeting with NCDEX also. GT and NAFED officers are attending our meeting if considering FPO. Every meeting ko GT or NAFED 400 madam. 400 members farmers. 70 lakhs turnover our 1 year in. Okay, thank you, sir. Annigiri FPC, promoted by WDD Karnataka, Mr. Umesh Annigiri. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ತಾಲೂಕಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ IAದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು IIM ನಮ್ಮ CBO. ನಮ್ಮ FPO ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 2021 June 9th. ದೆನ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು August 15th 2021. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ 750 ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸರ್. 7.5 ಲ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮದು ಶೇರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 9 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 1,35,00,000. ಈ 1,35,00,000 ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು 98 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. 98 ಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು 10-20% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಕುಸುಬಿ ನಮ್ಮದು ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಪ್ರಿಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು 85 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಬೆಂಗಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ದೆನ್ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣಿಗಿರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಸ್ಬೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನ ದಾಲ್ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಇತ್ತಿತ್ತಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ CBOದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ FPO ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು FPO ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು FPO. ಮೇಡಮ್ 750 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ. ದೆನ್ 1000 ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 1000 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 8th ಮೇಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ FPO ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ. ಹಾಂ 750 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಿದಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ओके ओके थोड़ा अंग्रेजी में बता दिया होता तो सर वुड हैव हर्ड यू स्ट्राइट अवे फर्स्ट हैंड. अब तो ट्रांसलेशन सुनना पड़ रहा है सर जी को. वी हैव बीन एबल टू reach a turnover of around 2 crore rupees, out of which the output business is around 19 lakhs. How much? 19 lakhs through safflower oil. That is a local 19. वो थोड़ा लोकल फ्लेवर है सर, safflower oil. तो इन्हीं का ब्रांड बना के अण्णीगिरी ब्रांड बना के बेच रहे हैं. एंड दे हैव प्रोक्यूर्ड सीड्स फ्रॉम रेड ग्राम सीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंपनी, उसको यहाँ उबाल के वही कंपनी को वापस बेच रहे हैं सर. उससे भी इनका बिजनेस हो रहा है. एंड ऑल्सो इनपुट बिजनेस कर रहे हैं. सो दो द टारगेट इज 1000, ये बता रहे हैं कि अब 750 है और 1-2 महीने में वो 1000 हो जाएगा. सर की तरफ से पूछना है कि CBBO का सपोर्ट मिला है आपको? सर एकदम मिला है सर. ये नंबर 1 CBO है हमारा IIMR. सर पूछते हैं कौन है? बहुत कम चांस मिलता है. सर तालियां बजा रहे हैं आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. Let's move on now. It is Sarvagendra FPC, promoted by WDD Karnataka, Mr. Guru Prasad Bhatt. Sarvagendra. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ FPO ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ FPOದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, CEO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು FPO ಒಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮದು ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಮನೆಗಳು ಒಂದೂರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನೆ, एक विलेज में एक ही घर है, ऐसा है हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है. तो इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है जुलाई 13, 2021 में. तो ಈ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ತುಂಬ 300 ಜನರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರನ್ನು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ, ಜುಲೈ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಂದರೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್. ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ವೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಬೇಗ 300ರನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇರೋದು 422. ಈ 422ರಲ್ಲಿ 300 ನಂತರದ 122 ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ FPOಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೀಲದ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರು. ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೀಲಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ತಲುಪಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮದೀಗ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ 13.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರದ ಒಂದು ಬಜೆಟನ್ನು, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ
ಲೋಕಲ್ ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾರ್ಪಾಲಿನ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ, ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ODOP ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೈಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೈಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರಿಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಲ್ಚಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧನೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ 1000 ದಾಲ್ಚಿನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಕಸಿ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ FPOಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು दालचीनी पौधे लाने का कोशिश कर रहे हैं औरंगाबाद से. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಹೇರಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹನಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹನಿ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹನಿ ಮಧುಮಕ್ಕಿ ಸಾಕ್ತಿರೋ? ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಥರ ಆ ಥರ. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಹನಿಯನ್ನು, ಕಾಡು ಹನಿಯನ್ನು, ಕಾಡು ಹನಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ಶಾಲ್ಮಲಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಸರ್ವಜೇಂದ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮಗೆ 80% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್ ದೋಟಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇದನ್ನು. QR ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ತಾ? QR ಕೋಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತ ನಾವು ಬೇರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು QR ಕೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ QR ಕೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಕ್ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಸಭಿಕೋ ಹೋತಿ ಹಾ कौन कौन खुद बेच रहे हैं, आपका ब्रांड बनाते हैं ना आप, खुद कौन कौन बेच रहे हैं? खुद का ब्रांड है ऐसे कौन है? उधर 1 2 3 4 5 6 7 ना. आप खुद का ब्रांड के लिए QR कोड को एप्लीकेशन डालना. QR कोड से आपका खुद का ब्रांड खुद ही रहते हैं, नहीं तो इसका मिसयूज होती है. ರೈತರು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ऐसा है, एक दिन मेरे पास में एक किसान आया वहाँ पे दिल्ली, और वो आम लेके आया साथ में, और उस आम के ऊपर उसके QR कोड थे, और उसके ऊपर उस फार्म की पूरी डिटेल थी, और कौन से स्थान पे क्या है, और प्योर ऑर्गेनिक था वो आम. तो जो मैंगो था वो एकदम ऑर्गेनिक था. और उसने कहा कि मेरे पास में देश के अन्य कोनों से फोन आते हैं कि आप हमारे को ये मैंगो भेजो. अब उसके फार्म का जो फार्म है वो उसका पूरा फोटो है वगैरह सब है, और उसकी पूरी डिटेल है कि उसके अंदर कितना कंटेंट है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितना उसके अंदर शुगर है, क्या है, जो पूरी उस फल की जो फ्रूट है उसकी विशेषताएं लिखी हुई. तो वो चीज़ उसको आप यहाँ बैठे मोबाइल पर देख सकते हो. ऐसे ही इन्होंने इसके ऊपर भी ये इन्होंने टी के लिए बनाया है. ये खुद, अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है, अभी नया युग है, नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. आदमी डायरेक्ट अपने घर बैठे
किसान के खेत में बात कर सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे ये फसल है, जो मैंने आम खाया या सेव मैंने खाई या जो भी नारियल है या नहीं है, वो बहुत पसंद है मुझे और अच्छा स्वाद है और मुझे आपके ही खेत का चाहिए। तो डायरेक्ट किसान का उस कंज्यूमर से भी संपर्क हो सकता है या व्यापारी से संपर्क हो सकता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसलिए सभी से मेरा कहना है कि अपना खुद का ब्रांड अवश्य बनाएं, जिससे कि आपको बीच में जो ये एक चैन जो बीच में है, वो बीच में से एक निश्चित रूप से कम होगी और आपको डायरेक्ट बेनिफिट भी होगा। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಂದು ನಾವು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಏನು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆನಂತರ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೋದು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸರ್ವೀಸಿಗಿನ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CSC ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ವೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ WDD ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್. ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸರ್ आपके हाथ में जो टी है सर, लीफ एंड बड ऑर्गेनिक टी, FED फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, मिस्टर षणमुगम. I'll call him, sir. Honorable dignitaries in the dais, CBBOs and all the FPOs. I come from OT and our FPO name is Leaf and Bud Organic Tea Farmer Producer Company, and our implementing agency is NAFED, and our CBBO is Erode Precision Pharma Company Limited. Ma'am, and we have 302 shareholders, and our main focus is on how much shareholders? 302 shareholders. Okay. And we belong to small farmer tea growers, and as tea is a universal drink, there is a lot of demand, and luckily we got a lot of directors who are tea experts. So we are making a very good tea and doing a good marketing. So organic tea or Ma'am, it's organic tea. Organic tea. And we are marketing throughout the states, around 15 FPOs, and we are looking forward to make business with other states who have come here. Recently we launched our brand Kanush Tea. Our implementing agency NAFED and our CBPO head Dr. Vadivel sir came and launched our product, and we got a very good response, and we are looking forward to make more business. What's your turnover? Ma'am, around 5 to 6 lakhs in this past 6 to 7 months. Okay. Good. And we are looking for... you are focusing only on tea? Ma'am, we are all small tea farmers, okay. Growers. Okay, very good. We are next looking for a flavor tea, orthodox tea, and looking for a small tea factory unit, ma'am. We are Very expecting from... you can take the help of Agriculture Infrastructure Fund. Okay, ma'am. You can, thank you for the opportunity. Yeah, thank you. This is the last presentation, madam, and it is Green High Range FPC, implementing agency NABARD, and Mr. Robin George. Mr. Robin George. Respected delegates and dignitaries, every day, good afternoon. My name is Robin George. I am coming from Kerala, Idiki. My implementing agency is NABARD and CBPO, Penime Development Society. Our company is registered on November 2021, and we have started our business on 2nd January 2022. We have started coconut oil making plant. We started with only one employee, and now we have around 10 people are working in our farm. Total, how many members are there in FPO?
now 10 people. Only 10. Farmers, how many farmers? 440 members are there. Okay. And we have received equity grant of 6,87,000. Okay. And we are applied for agriculture infra fund. Okay. And For what? For which project? For coconut oil making. Okay. For 1 month ago, we have. For coconut oil machinery? Yeah. Okay. For coconut and we are making other spices, masalas, chili powder, coriander powder like that, organic pickles. Okay. We are applied for infra fund for that one. And now we have 10 employees, 1 vehicle for delivery, and we have 3 sales outlets. What is your turnover? Sorry? Turnover kitna hai? How much is the turnover? Just 3 months we have 60 lakhs, and the last 2 months. 3 months? Yeah. Very good. And In 3 months, 60 lakhs turnover. Very good. And this financial year we have 2 months 60 lakhs. Abhi. Very good. Yeah. And now 10 people are working there. We are planning for giving around 100 employment within 5 years. Who is your CBBO? Pyramid Development Society, PDS. 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 Yeah. They are come here? Yeah. Okay, okay. They are helping you? Yeah, helping. Good. That's all. Yeah, thank you. Thank you so much. Now the session is open for discussion. Any one of you want to talk? Anybody can talk. Short, but only 2 minutes. Open discussion. ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ರು? 3 ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? बैठिए एक हेलो प्लीज माइक्स कोडी वन बाय वन. 1 मिनट पहले एफपीओ के जो डायरेक्टर हैं वो बोलेंगे, उसके बाद में सीबीबीओ का नंबर आएगा, ठीक है ना? तो पहले 1 मिनट, पहले जो बोलेंगे वो एफपीओ के डायरेक्टर या चेयरमैन है वो, उस हाँ एफपीओ वही बोले, सीबीबीओ के नहीं, सीबीबीओ के बाद में. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸುಳ್ಯ ಎಫ್ಪಿಒ. ಇದು ಎಫ್ಪಿಒಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೋಡನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. वो बता रहे हैं एफपीओ को जगह नहीं है, एपीएमसी में बहुत जगह खाली रहते हैं, इसको एफपीओ को आप दे सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हैं. 1 ಎಕರೆ ಆದರೂ ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎಫ್ಇಒ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ. ಸುಳ್ಯದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎಫ್ಇಒಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ 10% ಜಾಗವನ್ನ, ಅವರ ಟೋಟಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10% ಜಾಗವನ್ನ ಎಫ್ಇಒಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮಗೀಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ಅಂಗರಸರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಫೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಡನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು ರೂಮು, ಗೋಡನ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಡನ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಡೌನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಡನ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ಪುನಃ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಲೋನಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ಪಿಒಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಲೆದಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಲೀಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ತಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಿಂತರು. FEO ನಾ ನೀವು? ಮೇಡಮ್ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರೈತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿ 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ, 663 ಶೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬೇರೆ BBOಸ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒದ್ದಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ FEO ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ರೈತರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ 1 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ 1 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಂಗಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ತೆಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇವತ್ತು ವರ್ತಕರು ವರ್ತಿಸಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಎಳ್ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ವರ್ತಕರು 17 ರೂಪಾಯಿ 16 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 25-26 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಷನ್, ಈವನ್ ಏನು BBOs ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಟೇಷನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು FEOನ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ನೀವು ಬರೀ ಬಂದಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೊರತು ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ವರ್ಷ ಇರೋದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೊಸ FEOಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು? ನಾವು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮೇಡಮ್. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 25 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು FEO ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಏನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಈಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ FPO ಬೆಳೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಾಸನ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ತುರೇಕೆರೆ FPO ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನನಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚುವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಡ್ರೋನ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಇವ್ದು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಮಗೆ 10 lakhs ಡ್ರೋನ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಈಗ ನಾನು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮೇಡಮ್ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬರೀ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈತರಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 1000ರಿಂದ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೈತನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ FEO ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ರೈತನಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ CBBO ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ CBBO ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ CBBOದವರು FEOಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ FEOವನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಲಾಭ ಬರಬೇಕು. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೇನೋ ಭಾಷಣ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಟ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆದಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೇನು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 1 ಲೀಟ್ರ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ 1200 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. LTG ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮೇಡಮ್.
ನೀನು ಮಾತಾಡು. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಕೊಯ್ ಇಲ್ಲ. ಓರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ನಾನು CBO LTG ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಮ್ದು 15 FPO ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 400 ಎಬೋ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕನಕ ರೈತ ಅವ್ರದ್ದು 1000 ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ CEO ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕುಮುದ ಅಂತ, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. ನಮ್ಮದು 2 FPO ಬರುತ್ತೆ, ಕನಕ ರೈತ FPO ಹಾಗೂ ಮುತ್ತುರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ FPO. ಸೊ ಕನಕ ರೈತ FPO ವಿತಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ 1000 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ LTG ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಮಗೆ ADSR ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 1,50,000. ಸೊ 48,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 1 lakh ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು? FPO ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮು ಅದು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೊಂದು ವೀಡ್ ಕಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರದ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ವಿತಿನ್ 2 ವೀಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂತದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಈ FPO ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಅದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋಂಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ FPOನಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಹಾಯನೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಮಂಡ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹದೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. ODOP ಸ್ಕೀಮ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಾಗರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ CBBO ಯಾರು? ವಿಕಸನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ತುಂಬ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಕಂಪನಿಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಲೈ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಸಂಜೆ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೋಂದಾವಣಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. 3 ದಿನಕ್ಕೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೀಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ 308 ಜನ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾವಣಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 1 308 ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ SFSCಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 3,08,000 ಹಣ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬಂತು ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ 308 ಜನರ ರೈತ ಷೇರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು. ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗತವೈಭವವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ CBBO ವಿಕಸನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಾಂಬೆ IIT ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕದೆ ಬರೀ ಲೈಮ್, ನಾಟಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಗರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಟನ್ ಪೌಡ್ರ್ ಜಾಗರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ FPOಗಳು. ಹಲೋ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೀವು 10 ಟನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗರಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RF ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನೇ ಸ್ವಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ 550 ಜನ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 6,25,000 ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಬಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ FPO ಇವತ್ತು MPCSಗಳಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು FPO ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೈತರ ಆಶಾದಾಯಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ, ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಯಾವುದೇ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಸಹಕಾರ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೇವಿನಿಂಡಿ, ಟಾರ್ಪಲಿನ್, ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ಪಶುಹಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇದೊಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 90,000 ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 3 ಕಡೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. FSSI ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, GST ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ APMCನಲ್ಲಿ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೋಡನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ FPOಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ APMC ಬೋರ್ಡು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು FPOಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಹೀಗೇ ಸಾಗಲಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ಮಾದರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಲ್ಲದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಮಂಡ್ಯ ಜಾಗರಿ ಏನು ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಜಂಗುಮ ಜಾಗರಿ ರಥ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ಕೃಷಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಮೇಡಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಜಂಗುಮ ಜಾಗರಿ ರಥಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ CBO ಪರವಾಗಿ FPO ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ಯಾರು CBBO ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ಮಾತಾಡಿ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಲೋ मैम FPO. हाँ, कौन? मैम इधर FPO मैम तेलंगाना स्टेट आपके सामने. जी जी बताइए. मैम respected honorable minister and CBBO, FPO and CEOs and media, police, good afternoon all. मैम मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे. जी बताइए. इधर सब FPO लोग अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं. एज अ CEO आई एम वरिंग आफ्टर 3 years CBO वाला तो चले जाएगा. CEO को कंपनी को आगे लेके जाने का है. ये सब CEO जब तक रहेगा तब तक अच्छा करेगा, प्रोडक्ट अच्छा चले जाएगा. मगर CBO चलने के बाद क्या है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर से, आपसे, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो हर एक स्टेट में एक प्लेटफॉर्म बना मार्केटिंग का. अभी मेरा FPO ऑयल प्रोडक्शन करता है, तो दूसरा FPO भी ऑयल प्रोडक्शन करे तो वो सब इकट्ठा करके फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट को भेजेगा. फिर स्टेट में एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा तो वो पूरा ऑयल एकदम सेंट्रल तक जाएगा. जब इंटरनेशनल से डिमांड आ जाएगा ना, तो ये प्लेटफॉर्म सबको हेल्प हो जाएगा. बिना ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मार्केटिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं. ऐसा है, आपका विषय एकदम सही है. इसके ऊपर सरकार ने काम शुरू कर दिया है
एक पोर्टल बन रहा है पूरे देश का सभी एफपीओ सीबीबीओज का, और उसके अंदर आप जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल और मार्केटिंग उसका सारा सिस्टम सेटअप होगा। तो इसलिए जब भी ये एफपीओ सीबीबीओ चले भी जाएंगे तो आपको पूरा सपोर्ट सरकार का रहेगा, और मार्केट से भी आपका लिंक होगा, और कौन बायर्स परचेजर्स कौन कहाँ है, सारा देश का पूरा एक एफपीओ का कंसेप्ट जो है ना उसको पूरा मार्केट से जोड़ने का, और ये जो आप कह रहे हो ना ये सारी चीज़ें, अगला जो पोर्टल बन रहा है वो जल्दी तैयार होगा और आप सबको अवेलेबल भी हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक इसके यू ऊपर सर। काम चल रहा है बाकायदा। ऐसा हो जाएगा तो अपना इंडिया का जीडीपी आगे जाएगा। हाँ लोकेश जी, आप कुछ बोलना चाहे? माइक देना आगे इनको। Sir, here. Sir, this is Arvind Prasad from Alangudi PCL, Tamil Nadu. I am putting a similar request like my brother said. The policies and schemes are very good for the farmers. It has difficulties to reach, the workforce taking into the field. The one thing. आप ऊपर आ जाओ अगर कहना तो यहाँ से कह दो, या माइक दे दो। I'm here. Okay, the difficulty is. उधर दे दो, है माइक यार। उधर है, आप उससे बोलिए। Hello, good evening, madam. Yeah, can I finish? Yeah. Good evening, madam. Just hold on. Bengaluru FPCL, Bengaluru Farmer Producer Company CEO. हेलो, वो बोल रहे हैं ना, उनको बोलने दो। Yeah, so many interruptions. Just wait for a while. हाँ आप बोलिए। Yeah. Yeah, my request is similar to my friend what he said. There are CBOs and RIs supporting to FPOs. Currently, in our district, particularly in Pudukkottai, we have 14 FPOs, but we don't have a CBBO out there. It doesn't mean I am complaining RIs or CBBOs, but it's not approachable. No, The who is your policies- CBBO? Who is your CBBO? Seeds. They are Who doing is good. here? I'm not complaining it. I'm क्या not problem complaining is? it. एक मिनट। Yeah. क्या आपके उसके पास गए नहीं? You are not gone to them. What is your problem? No. CBBO कौन है? Yeah, who is it? Seeds. Seeds. Who is seeds? Now, who is the implementing agency for NABARD, NAFED? NABARD. Yes. तमिलनाडु का NABARD वाले कौन है? तमिलनाडु। क्या? What is your problem? No. No, I am telling about NABARD, Tamil Nadu. No one has come. CBBO कौन है? No, I'm not complaining the CBBO. Okay. The thing No. is, We are here to resolve the problem. That's why he told about the CBBO problem. No, it's We not have a to- CBBO problem. I'm just requesting. Yeah. You're putting, CBBOs in a cluster basis. Madurai has 3 or 4 CBBOs in a particular place. But Pudukkottai doesn't have even one RI. Even one. But there are 14 ABOs. It's almost 250 kilometers away from us. The policies given by the government, it takes time to approach. Of course, the DDs are, every district have deputy directors, agriculture department officers. They are taking care of us. But CBBOs somewhere else. They are not approachable. What do you want? Just inform. What do you want? Every district, put a CBBO on every district. At least every 20 APOs put a CBBO in centralized place. We'll work out, Appa. We'll find out with your minister what they are doing for you. FPO, CBBOs, and CBBOs, yeah.
माइक नहीं FPO है नहीं आया ना क्या करना है नहीं आया हाँ हाँ सीट्स कौन है हेलो मैम आई एम तो आपका एक मिनट पहले सुनो, आपके हेलो वो जो आप खड़े थे ना, आपके क्या नाम था उसका CBBO का? शीट्स से कोई नहीं है ना? सर आई एम आप शीट से हैं? तो इतनी देर से आपको आवाज लगाई जा रही है, तो आप खड़े क्यों नहीं हुए? No sir, I am not CBPO representative. I am one of the chairman in FPO. Okay. तो फिर क्या मतलब मैं CBPO का? Actually I am implemented by seats. I mean our RA is seats, and I would like to say that seats has conducted like a regional coordinator interview for their region to take a special concentration on each and every FPO. So those interviews are completed. Actually they are placing each region and regional office, and they are placing the appointing regional coordinators for those region. Our region we got a regional coordinator, and I know that the same time only these interviews are happening actually. I want to know your CBBO is helping you or not? Yeah, they are extremely helping us, and they are coming down to ground, and they are helping us. That's why we have achieved 1 crore transaction within 8 months. Based on business linkage. Same CBBO is working for him also. Yeah, what is the problem is they have 14 FPO in same region. So the concentration is mismatching. Like here we have a regional coordinator should have been appointed. That is guided by NABARD, and the regional coordinator also, the interview also completed. No, your CBBO got how many FPOs? 84, I think 87 84, FPOs. okay. That is the problem. Yeah, that is the problem, but That is they are the problem. rectifying the problem by appointing regional coordinators. No. The government of India also says that only 25. Yeah, in 10K scheme they have 25. Who has given that 84? Actually, in 10K scheme they got 24, and other schemes. No. He is telling for one CBBO they allotted 84 FPOs. That's why he is not going there. No. For 10K scheme only 24 FPO is allotted. Then what is his problem? But in other schemes they have implemented different FPOs. He is also confused. He is telling 25 only. Yeah, tell. Give mic there, no? पीछे दे दो डॉक्टर हिंदे माइक कोडी नमस्ते मैडम इधर है माइक हियर इज माइक कम हियर no some problem in Tamil Nadu FPOs and CBOs problem yeah हेलो सर नमस्ते सीट्स है ना सीट से कोई नहीं है ना सीट्स से CBBO से कौन आया है CBBO है मुझे FPO से बात नहीं करनी है अभी FPO का ठहरो CBBO का है कि नहीं है उसके कार्रवाई करो सुनो वो सीट्स का इतनी जगह पर वो लेके बैठा है और यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग है और उसमें वो आया नहीं है इसलिए उसके एक्शन होना चाहिए ना सब सहमत हैं जी 0% हेल्पिंग ठीक है आप है ना यहाँ कौन है वो विजय लक्ष्मी जी का No, we'll take action against seats who is the CBBO for many of the FPO companies in Tamil Nadu. Okay, we'll take action and we'll find out what is the reason why they are not doing. Okay, we'll take action from Delhi. ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತುಕಾರಾಮ್ ಪವಾರ್ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿಂದ ಬಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು अभी CBBO बात कीजिए ना ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಹೇಳಿ
ಮೇಡಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ case studies what we have seen today, they are all done by a reputed CBVOs like Indian Institute of Millet Research, NABARD and all. But there are a lot of the CBVOs not doing much work in the rural area. That's one thing. And second thing is, they have to be monitored very stringently in a district level meeting, madam. That's the second thing. And third thing is, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೈತರಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, CEO ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ CBBOಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಮೂರನೇದು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ CBOಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, they have to compete with the national and international market. So their business, that capacity building has to be given lot of emphasis to the board of directors and CEO. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, there is a understanding between the bureaucracy as well as some of the board of directors, and they are getting spoiled. I'm not generalizing the whole thing. These things are happening in some part of the state as well as in the other parts of this country also. Please make a follow-up of those issues, madam. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. CBBO ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? CBBO ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಒಬ್ಬರು CBBO ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೈಕ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಬ್ರು ಕೊಡಿಯಪ್ಪ, ಮೈಕ್ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರಲಿ. ಮೈಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಮೈಕ್. Honorable Ministers, I am a trustee with the Art of Living and represent SSRDP, which is the CBBO, and we have registered 15 For private people, FPOs, SHG 2 crores in a 3% interest and subsidy. Okay, we are in future, we are going to give 5 crore rupees for FPOs. That will be wonderful. That will be Not now, the decision has not taken, but we will take that decision. Okay. Right. One little problem that we are facing, madam, is of farmer certificate, which some districts they are giving very readily, and कुछ districts में है वो कह रहे हैं कि वो land आपके नाम पे ही होना चाहिए, ना कि family के नाम. Generally अगर उनके father के नाम पे है, family पे नाम पे है, तो वो दे दिया है. इसलिए हमारे सारे FPO register नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो certificate अटका हुआ है. नहीं तो हम सब register कर जाते. और last point, I think दिल्ली में ये already चिंतला साहब ने ये पॉइंट क्लियर कर दिया था कि वो 10% TDS जो काट के दे रहे हैं, तो हमारे पैसे एकदम कम हो जाते हैं. वो तो शायद आपके लेवल पे रिव्यू हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Next CBBO. If anybody is there. Yeah. Yeah. Good evening, ma'am. Good evening, sir.
Myself, Ram Babu, working with CSA, Center for Sustainable Agriculture. We are working in Andhra Pradesh and Telangana, both states, with the NABARD, NCDC and SFSC also. We are promoting Agmark license applied for with the support of DMI in both states for mango and fruits and vegetables purpose. Very good. Yeah, it is in under processment. We'll get as soon as possible. And also with the support of NABARD, we are implementing 10 FPOs. Out of 10 FPOs, 6 FPOs are received equity grant also as of now. So our request is that for the processing unit purpose, please provide small little bit land at the FPO areas. It will be very useful to us, ma'am. So for the processing units purpose. Land, you have to talk with the state governments, because land, we are not, government of India is not handling lands. Even for government of India projects, highways, railways, we are asking state government for land. Because the land is with the state government. Revenue department is with the state government. Yes, ma'am. Government But, of India is not handling land. Your Only support we can- also, we need your support also Different for governments are having their own plan. Yes, Like Karnataka, they are allotting APMC land 10% of their area to FPOs. Like that, your state also can do something. Yes, ma'am. And one more thing, ma'am, whatever discussed in national conference as per guidelines related one GST and internal budgets adjustments, whatever is discussed in national conference, it will be useful to us, ma'am. Thank you, ma'am. But any help is needed to any government, our department is ready to extend, because we can talk to state government officials, we can talk to state government ministers, that we can do. If Yeah, you okay, got ma'am. any problem, you can do that. But land issues, government of India is not handling. That you should be very careful, and we are not giving that. Yeah. CBBO. Yeah. ಮೇಡಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮ್ ಎಫ್ ಪಿ ಒಸ್ ಇದೇನಂತ ಹೇಳಂತಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಪಿ ಒಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಪಿ ಒಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡು, ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿದು ಎಂಪೆನಲ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಐತೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಪಿ ಒಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆ You ರೀತಿಯಲ್ಲಿ speak in other language, no? She will understand. Madam, Speak with in respect to English. the NCDC FPOs, we got 2 FPOs at Telangana states from the NCDC through the ICR Atari. So there is a bit of difficulty to get the management cost as well as the equity matching grant, because there are some bit of a different procedure compared to the NABARD, WDD and SFSC. Though we have mobilized 300 plus farmers in NCDC and submitted applications, but the equity applications are lying with them and it is a bit not completed. So maybe if it is can done uniform applications and uniform procedure to issue this one, that will be a very nice thing, ma'am. And another thing is that at the Karnataka FPOs, means regional agriculture officers at RSK level, if each agriculture officer adopt the one FPO, so definitely it will be helpful for the CBBO as well to monitor, and also to the FPOs to get some schemes related benefits. So convergence of the schemes will also happen at the RSK level, right, Samparka Kendra level, or at the ADA office level. So that could be a better benefit to the CBBO as well, to much more work and extend benefits to the FPOs. Definitely we will look into it. I request Vikas and Sumit to note down this particular issue, that NCDC is not cooperating with regard to equity grant and other things. So we'll go back and talk to NCDC immediately on that issue. Sir, namaskar, sir.
मैं CBPO भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था से हैदराबाद से हूँ सर। सर हमारे यहाँ 2 FPO को गठन करना था। हमने रिकॉर्ड टाइम में 2 FPO को बना दिया है सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना स्टेट में, एक चिन्नकोडूर मंडल और एक नारायणरावपेट मंडल। हमने 1150 मेंबर्स को जुटाया है और एक FPO में 350 के करीब मेंबर्स को जुटाया है। और बिजनेस प्लान में हम लोग लगभग 9 लाख की राशि हमने प्रॉफिट बनाई है FPOs के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर, हमें अभी तक इक्विटी ग्रांट्स नहीं मिले हैं। इक्विटी ग्रांट, या इक्विटी ग्रांट का मैंने कहा ना, जब 300 नहीं सर 300 होंगे तभी मिलेगा। नहीं, एक में तो 1150 मेंबर्स है सर। 1150 है, उसको मिल गया होगा। नहीं सर, नहीं मिला, इसीलिए तो कह रहे हैं। कैसे नहीं मिला, कौन है? आइए सर मैं बात इम्प्लीमेंटेशन NCDC नहीं, है। आपने ना उसका चुनाव की प्रक्रिया है, वो जो जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को कर लिया, सब कर लिया नहीं सर। सर, इनका NCDC का मामला NCDC का problem- not doing anything, no, will go on top. हाँ, नहीं NCDC का मामला है ना, लगता है वहीं से मैडम। NCDC एजेंसी कौन सी है? NCDC हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मैडम। हाँ, क्योंकि हमने काफ़ी श्रम किया है, इतने सारे मेंबर्स को जुटाया है, फिर भी ग्रांट बोल रहे हैं सर, ये भी पता नहीं, ये नया चीज नहीं आपको है ना इक्विटी ग्रांट मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट आ रही है उसमें आपको हम दिलाएंगे, ठीक है? इक्विटी ग्रांट, लेकिन 300 मेंबर होना जरूरी है। नहीं सर, हम तो ज्यादा क्रॉस कर अब लास्ट एक कोई CBBO का बोले लास्ट, हाँ इनको दे दो। Good evening to all, respected ministers, officials and co-CBBOs and farmers. Sir, the FPOs are paying income tax on their profit. So it is kindly look into the matter to, exempt from the income tax. So it is a policy matter of the government, so that please look into this matter. So we are promoting 25 FPOs across the nation as a CBBO Grand Thornton GT. So we were paid in the Andhra Pradesh income tax. Even in the last financial year, so we were paid. When they are getting 5,000 or 10,000 profit, so that we have please. already written a letter Madam. has gone from our secretary to Secretary Department of Financial Services DFS. Madam. So let us see their response. Thank you, madam. Thanks a lot. ठीक है, थैंक यू। अब ऐसा है, अब हाँ एक लास्ट, चलो एक और अफसर आप बैठ जाइए प्लीज, क्योंकि सेम विषय आ रहे हैं वापस। Good evening, sir. I am B.V. Ratna, CBO RHGMSS, Andhra Pradesh, sir. Really, there is one question in front of you, sir. The Agriculture Department not issued license to our FPOs in Andhra Pradesh, sir, because of due to RB case. Please kindly think about this issue, sir. Madam. Fertilizer license, madam, mainly. Not issued to FPOs, madam. They rejected all the proposals. देखिए फर्टिलाइजर, चलो ये विषय पे आप कर लेना बात इससे। अब बैठिए, ऐसा है, अब अपन समापन की ओर जाते हैं। आपको भी बोलना है, चलिए बोलिए एक बार। अब ऐसे नहीं, आप बोलिए, हाँ बोलिए, आप बोलो प्लीज। Good evening. I am Sanbagaraj, Virdai Millets CBPO from Tamil Nadu, near Madurai. At present, we are handholding 14 FPOs, 9 by implementing agency NAFAD, 5 by TNSFAC. We are getting good support from both implementing agencies. Now we received equity grant for 3, among which one FPO from Salamathur. The total members are 750 members. Uniqueness is full of women farmers. 750 members are all are women. So we received the focused crop is tapioca. Okay, sir. Sir, one suggestion, please. Under the price support scheme or market intervention scheme, now at present, the procurement are being made through concerned state marketing board.
you can purchase, you can initiate purchase directly to the FPOs and with their unique crops. Thank you, sir. नहीं, FPOs को तो ENAM के साथ जोड़ना है and Madam, Hindi yeah, में. all FPOs should be on ENAM. Okay. That is our effort. Okay. And all of you also should cooperate and do it. But at present it is in nascent stage, but it is to be, No, some of the it is to be FPOs speeded up. Okay. No, there are FPOs who are directly linked with ENAM. Okay, madam. Yeah. Thank So you. you can start. टोटली जितने भी एफपीओ है ना, वो सारे एफपीओ आप किसी भी समय इनाम मंडी के साथ में जोड़ सकते हो। और ये सीबीबीओ है, इसके ऊपर अपना काम शुरू करें, सभी एफपीओ को लिंक करवा दे, वो घर बैठे अपने प्रोडक्शन है उसको बेच सकता है कहीं पर भी। तो ये इनाम मंडी के साथ में ऑलरेडी व्यवस्था दी हुई है। अब आप वैसा बैठिए प्लीज प्लीज। अब सुबह से ये अपना सत्र चल रहा है लगातार, और जिसमें हमारे कई किसान जिन्होंने जो एफपीओ का संचालन कर रहे हैं उन्होंने अपना अनुभव भी बताया, और अनुभव सुनने के बाद में निश्चित रूप से एक अच्छा लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ एफपीओ, और कुछ एफपीओ जो धीमी गति से चल रहे हैं तो उनको हमें और गति देने की आवश्यकता है, और जो स्पीड के साथ में चल रहे हैं उनको भी एक गियर और लगाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अभी अपने को बहुत आगे तक जाना है, तो इसके लिए अपनी सुबह से ये सारा चल रहा है। आपको इससे ये ज्ञात हो गया होगा कि भारत सरकार के 2 मंत्री आज सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, और कर्नाटक सरकार के मंत्री भी अभी यहाँ पर सुबह यहाँ थे। अभी उनकी मुख्यमंत्री जी के वहाँ पर मीटिंग थी, उसको तुरंत करके और मीटिंग से तुरंत यहाँ पर वापस पहुँचे। इससे ही आपको पता चल गया होगा कि प्रधानमंत्री जी का और हमारे मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का और हम सब का इस काम को लेकर कितनी गंभीरता है। आपने आज दिन तक नहीं देखा होगा, पहले भी मंत्री रहे होंगे, सिर्फ उद्घाटन सत्र में रहते हैं या समापन सत्र में रहते हैं। ये रहे होंगे कभी 1 घंटा स्पीच या 10 मिनट दे दिया होगा, लेकिन लगातार आपके यहाँ पर हम लगातार बैठ के इस काम को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप समझ गए होंगे कि कितना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो मुझे 1-2 चीज़ कहना है। एक तो आप अगली जो रीजनल बैठक होगी वो 2 महीने बाद में होगी, डेट आपके पास पहुंच जाएगी, और वो स्थान रहेगा चेन्नई। चेन्नई रखें, आप सबकी सहमति हो तो चेन्नई रखें। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी केरला में रखनी, उसके 2 महीने बाद में नेक्स्ट केरला, ठीक है। सबका नंबर आएगा। अब तय कर दी है, तो आप सबने पहले एक बार में सहमति दे दी है, तो चेन्नई के रखेंगे, और चेन्नई के बाद में जो उससे नेक्स्ट होगी वो केरला में होगी 2 महीने बाद, ठीक है। उसके बाद में हैदराबाद का कह रहे हैं मंत्री जी, विजय लक्ष्मी जी क्योंकि मेजबान रहेंगे वहां पे, तो विजय लक्ष्मी जी वहां पर अपनी सारी सेवा करेंगे, खाना पीना, और आप भगत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चेन्नई में है ना नेक्स्ट? हाँ, वहाँ आप चेन्नई वाले कौन है? चेन्नई वाले हाथ खड़े करो यहाँ पे। अब नेक्स्ट में हम आपके वहाँ पर मेहमान बन के आ रहे हैं, आप कितनी सेवा करते हैं देखते हैं। सभी आएंगे आपके वहाँ पर सेवा मेजबानी कर, मेहमान बन के। तो नेक्स्ट में मीटिंग वो रहेगी, और तब तक हमें क्या काम करने हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है। एफपीओ से हम नहीं कहना चाहते किसी सीबीबीओ को भी, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमने थैंक्स भी कहा है, और उनके लिए तालियां भी बजवाई है और बजाई भी है। और जो धीरे चल रहे हैं, कृपया करके वो अगला जो 2 महीने बाद में जो मीटिंग होनी है उससे पहले अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दें कि आपका रोड मैप क्या है। अभी जैसे एक मेरे भाई ने कहा यहाँ से कि ये सीबीबीओ तो 5 साल बाद में हमें छोड़कर चले जाएंगे, सीबीबीओ छोड़कर चले जाएंगे, बाद में हमें ही काम करना है। बाद में नहीं, आपको तो अभी काम करना ही है, लगातार आपको ही करना है।
लेकिन आपको तब तक जो आपको आपकी जिम्मेवारी है, जो अपनी प्रोसेसिंग यूनिट है, या आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, या उनको कौन सी मार्केट से जोड़ना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू एडिट करने के लिए कौन सी यूनिट लगाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इन 2 महीनों के अंदर रोड मैप हो जाए। एक भी, और किसी का मान लो 200 का पूरा भी 300 बन गए, उनको भी करना है, 300 नहीं हुए उनको भी करना है। इक्विटी ग्रांट का इंतजार नहीं करना है कि इक्विटी ग्रांट आएंगे उसके बाद में हम ये करेंगे कि उसके बाद में हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे। नहीं, अब आप तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी से बना दो, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे ही आपके इक्विटी ग्रांट आए उसी दिन 300 मेंबर होते ही आप अपने सेंट्रल को सपोर्ट उसको सबमिट कर दो, ताकि आपका काम तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाए। तो नंबर 1 तो अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और आगे का रोड मैप है, क्या आप करने जाएंगे, उसका पूरा एक मीटिंग करके, मैं आपसे पुनः कहता हूं, इन 2 महीनों के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन में अपने जनरल बॉडी की मीटिंग बुला लें। 15 दिन में यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी जनरल बॉडी की मीटिंग का मतलब हो गया, अगर किसी एफपीओ में 500 मेंबर है तो उन 500 मेंबर्स को बुलाएं। जिस तरह से ये कार्यशाला चल रही है वैसे ही आपको वहां पर अपनी मीटिंग करनी है 15 दिन के अंदर अंदर, और वहां पर उनको बताना है कि हम ये करेंगे, और किसान वहां पर कहेंगे कि आप इससे ये हम ये चाहते हैं। तो दोनों को मिलकर और जो वहां तय होगा वो काम आगे बढ़ाना है। इसलिए 15 दिन में सभी अपने वहां पर जाकर जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाएं, किसानों की क्या, आप किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपके डायरेक्टर हैं वो भी बताएं कि हम ये कर रहे हैं, और सीबीबीओ भी बताए कि हम ये कर रहे हैं। तो उन किसानों को भी ध्यान में रहेगा, और वो किसान जाकर आगे 10 किसान को कहेगा कि हम इस तरह से हमारे आने वाले समय के अंदर हम अपने फसल का इस तरह से वैल्यू एडिट करके और इतनी इनकम कमाएंगे। तो आप भी मेंबर जुड़ो, तो आपके मेंबर्स बढ़ जाएंगे और तुरंत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एक तो आपको जनरल बॉडी की मीटिंग बुलानी है, और दूसरा आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, और तीसरा मेंबर्स को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी है करने हैं। अधिक से अधिक छोटे किसानों को हमें जोड़ना है, और हमें हर उस व्यक्ति का सहयोग लेना है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में काम कोई करने वाली एजेंसी वो अगर कोई हो तो उनसे संपर्क करें। समाज के अंदर भी कई गांव के अंदर लोग, प्रतिष्ठित लोग होते हैं जिनका प्रभाव होता है, उनको पहले जोड़ें। उनको जोड़ेंगे तो उनके माध्यम से या उनको देखकर दूसरे लोग भी हमारे सदस्य जुड़ेंगे। इस पर प्रधानमंत्री जी का विशेष इस योजना के ऊपर ध्यान है, और आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये एफपीओ का जो कंसेप्ट है अभी जिस गति के साथ चल रहा है, ये अगर पूर्णता की ओर बढ़ा तो आने वाले टाइम के अंदर, जैसा मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा, कि इकोनॉमिक्स के अंदर इस जो हमारी जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा योगदान किसी का होगा तो भारत की एग्रीकल्चर का होगा, और वो आप सबके सहयोग से होगा। तो इसलिए मुझे आपसे यही कहना था, अगली मीटिंग में अपन पुनः मिलेंगे और चर्चा करेंगे। तो और तब तक ये पूरी अगली जो रिपोर्टिंग होगी उसमें प्रत्येक सीबीबीओ है वो अपनी प्रेजेंटेशन पहले भेजेगा कार्यालय, वहाँ पर मंत्रालय में अपनी जो एजेंसी है उसके पास में भेजेंगे अपना जो भी रोड मैप है कि हम भविष्य में ये करने जा रहे हैं, वो उस मीटिंग से पहले अपनी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसके पास में भेज दें। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी, चाहे स्टेट की है, चाहे वो नाबार्ड, नेफेड, एनसीडीसी जो भी है, वो भी तुरंत प्रभाव से मंत्रालय के अंदर भेजें कि हमारे जो सीबीबीओ है वो इस तरह से किसानों के लिए आने वाले समय के अंदर करेंगे। तो इसकी स्टडी होगी, और बाकी भविष्य के अंदर ये सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जो है वो एक पोर्टल पे आ जाएगी। उस समय तो सारे ही किसान एक दूसरे को उसको देख पाएंगे। आज एक एफपीओ अगर कर्नाटक का है और दूसरा एफपीओ अगर कोई राजस्थान का है या कोई अगर वो बंगाल का है, तो वो एक दूसरे के काम को भी देख सकेगा और अपने प्रोडक्शन है उसका सेल कर सकते हैं, या वहाँ से उसकी एक दूसरे की उसके अंदर गाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से उसका एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम के अंदर पोर्टल भी बनेगा जब ये एफपीओ सीबीबीओ को इन सबको सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से मुझे एक यही कहना है कि ये सारी चीज़ों को लेकर कर रहे हैं गंभीरता के साथ।
तो मुझे लगता है कि इसको लेकर हमारे मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, ये भी चिंतित हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी, और सब कुल मिलाकर ये कि कहना है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर किसानों के लिए ये एफपीओ के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का विजन है, उसको हमें किसानों की इनकम बढ़ाने में और किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका होगी। और इसके लिए शोभा जी तो हमेशा हमारे साथ है ही, किसानों के लिए हर समय जहाँ भी जाना हो भेजना हो तो तुरंत यही है कि मेरे किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं। तो हमें सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो इस अवसर पर मैं शोभा जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने जो इन सभी को धन्यवाद के रूप में और आगे जो और क्या करना है उसके बारे में आपको लास्ट में अपने कमेंट्स के माध्यम से आपको कहेंगे, और उसके बाद में राष्ट्रगान नेशनल एंथम जो हमारा गीत है वो होगा, और उसके बाद में हम सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ शोभा जी से कि वो हमें मार्गदर्शित करें। ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुबह से हम बहुत बात किए हैं। मैं एक ही विनती करती हूँ, अभी कैलाश जी ने आपको सभी को बताया, अभी सीबीबीओ को हम स्ट्रांग करना है और सीबीबीओ एफपीओ को स्ट्रांग करना है, इतना हम करना है। वापस जाने के बाद तुरंत एक बार सीबीबीओ अपना अपना एफपीओ कितना है 25 आपके हैंड होल्ड में 25 है एफपीओस, इसका मीटिंग तुरंत बुलाना एंड इसका हम इधर क्या चर्चा किया है उसे किसानों तक पहुंचाना, ये हमारा पहला दायित्व है। इसीलिए आज का मीटिंग हो तो केवल हमारे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आगे लेके जाएंगे, सीबीबीओ एंड एफपीओ का हैंड होल्ड कैसे करेंगे, इसके बारे में चर्चा का एक मीटिंग था। इसीलिए मैंने आप सभी को विनती करती हूँ, वापस जाने के बाद तुरंत मीटिंग बुलाइए, हम क्या इधर चर्चा किया है उसको उधर बताइए एंड एफपीओ को मजबूत कीजिए एंड एफपीओ के साथ साथ किसानों को मजबूत कीजिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा देश तो आगे बढ़ना है, किसान के साथ ही आगे बढ़ना है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी तो केंद्र सरकार इतना गंभीर है, हमारा बजट में पैसा बढ़ाया, किसके लिए बढ़ाया? हम पैसा तो खर्च करने वाले स्टेट ही है, केंद्र सरकार बजट में पैसा रखते हैं, पहले 2013 में अभी 1,32,000 करोड़ हम रखे हैं, किसके लिए रखे हैं? वो तो केंद्र सरकार यूज नहीं करते हैं, वो तो पूरा का पूरा जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट में जाती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है एंड किसानों तक जाती है, वो तो किसान तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरा आपको इतना हम बता रहे हैं, हमारे लिए नहीं है, हम सब मिलके किसानों को मदद देना, किसानों को अच्छा करना, किसानों का आय को द्विगुनी करना, डबल द फार्मर इनकम, वी हैव टू फोकस ऑन डबल द फार्मर इनकम, दिस इज द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। विजन किसके लिए है? विजन हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए है। इसीलिए मैं आपको विनती करती हूँ, कुछ शिकायत है तो कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर हमको बताइए। आप काम करने के समय बहुत शिकायत आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बीच बीच में रुकावट आती है, जरूर बताइए, क्योंकि अगले 2 महीने में हम बैठने वाले हैं, बहुत सीरियसली बैठने वाले हैं। आज तो चर्चा हुआ वो तमिलनाडु का सीड्स सीबीबीओ नहीं आया, वो तो मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा सब कंपनी को हम निकालने वाले हैं, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की इच्छा है इसको आगे लेके जाना है, किसानों को मदद करना, इसके वजह से हम दायित्व दिया है। ये दायित्व कौन नहीं निभाते हैं इसको तो पनिशमेंट जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने आप सभी को मैंने विनती करती हूँ, बहुत सीरियसली आप बैठिए, आपका एफपीओ के साथ बैठिए, ज्यादा एफपीओ भी नहीं है, केवल 25 है आपके पास, 25, ओनली 25, the CBBOs are looking after only 25 FPOs, that's all। सबका 25 भी नहीं है, बहुत कम भी है, कर्नाटक में वो 25 रखे हैं। इसीलिए ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ FPO ಮತ್ತು CBOಗಳಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮಗೇನೋ ಲಾಭ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ।
ಯಾವುದೋ ನಮಗೇನೋ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಲಾಭ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ FEOಗಳು ಎಲ್ಲ CBBOಗಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ FEOವನ್ನು ನಾವು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕೂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. अभी भी हमारा FPO में भी 591 कितना है, इसमें 300 तक 300 तक लोग नहीं है. इसको पूरा करना, नहीं तो आपको सरकार का मदद नहीं मिलेगा. इसलिए मैं विनती करती हूँ, इसको पूरा करने के लिए किसान इतना है, हमारा देश, हमारा गांव पूरा किसान से भरा है. ये तो बेंगलुरु में हम नहीं बता रहे, बेंगलुरु में FPO बना हुआ ऐसा नहीं बता रहे, वो तो पूरा गांव वाला का FPO है. इसलिए गांव में तो किसान ही किसान है. 300 किसानों को 300 किसानों को ढूंढने का क्या प्रॉब्लम है? इसलिए सीरियसली इसका बारे में सोचिए. एंड आपके साथ हम सब है, एंड आपका प्रोडक्ट्स हुआ हम एक्सपोर्ट तक लेके जाना. मैं एक ही विनती करती हूँ, केवल इधर नहीं रुकना. हम बेंगलुरु का मार्केट में, आपका सिटी का मार्केट में, आपका नगर का मार्केट में, आपका गांव का मार्केट में नहीं रुकना. इसको हम इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना, इसके लिए हम सोचना. इसीलिए सब मिलके काम करेंगे. कौन सा स्टेट में कुछ प्रॉब्लम है आप तो बताए हैं, तमिलनाडु में है, ऐसा है, किधर प्रॉब्लम है जरूर हमके लिखिए, जरूर बताइए. उसको सुलझाने के लिए हम जरूर काम करेंगे. हमारे अधिकारी सब सुने हैं, वापस जाने के बाद ही इसका ऊपर कार्रवाई लेने का एंड उसको ठीक करने का भी. क्या क्या प्रॉब्लम है, अभी इक्विटी फंड में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे बताया, इसको भी ठीक करने के लिए जरूर हम कोशिश करेंगे. सभी को धन्यवाद. आप बहुत दूर से आए हैं, बहुत सुने हैं, बहुत समय तक आप बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, इसलिए आप सभी को मैंने धन्यवाद देती हूँ. फिर मिलेंगे. पहले तो 2 महीने के बाद चेन्नई में मिलेंगे, 4 महीने के बाद हम केरला में बैठेंगे, उसके बाद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, सब जगह हम जरूर आएंगे. उधर क्या क्या प्रॉब्लम है, उधर किसान कैसे है वो भी देखेंगे. हम फील्ड विजिट भी हम दोनों करेंगे. क्या प्रॉब्लम है, आपका FPO कैसा है, FPO का ऑफिस कैसा है. अभी तो एलोकेशन किया है FPO बनाने के लिए 5858 ये राज्य के लिए, हमारे ये 5-7 राज्य एंड यूनियन टेरिटरी के लिए. अभी बने हैं केवल 575, बहुत बाकी है. 575 में भी 300 तक किसानों को नहीं जुड़े हैं, इसलिए इसको पूरा करना. 858 को पूरा करके हम 2 महीने के बाद बैठना, ठीक है ना? करेंगे नहीं करेंगे? 558 FPOs हम बनाना ही है, एंड हर FPO में 300 से ज्यादा किसानों को जोड़ना ही है. ये हमारे टारगेट है, ठीक है? बोलो भारत माता की. जोड़ने का एक मंत्र बताता हूँ, सुनो. जोड़ने का एक मंत्र बताता हूँ. 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये देंगे सब किसानों को. आप उनको कहो वो 2000 रुपये FPO में जमा करवा दें. घर का कुछ नहीं लग रहा है. 31 को आएंगे प्रधानमंत्री जी, 2000 रुपये सबको दे रहे हैं ना, तो उनको कहिए प्लीज एक बार तो ये कर ही लो. तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसका उपयोग ले सकते हैं आप मीटिंग करके गांव में जाके, और इसको करेंगे. और तो निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बैठे नेताजी, ये भी यही कह रहे हैं कि आप हमारे को जोड़ो, हमारे को कहो. हम तैयार बैठे हैं जुड़ने के लिए और जोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं. तो CBBO से भी निवेदन है कि ऐसे जो उत्साही और संगठन है उनको भी आप कहिए, ताकि वो भी आपका सपोर्ट करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ FPOs ಮತ್ತು CBOಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ, ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ರೈತರನ್ನ ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಇದರ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಡಬಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ 2023 ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಇನ್ನೂ 300 ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 300 ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿದಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಪೋಸ್ ರೈತನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಿದರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು 450 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಚೌಧರಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ 300 ಜನ ಕೂಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಂಬೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 20 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂಥವ್ರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಫೇಡಾವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ADBಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳು ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತು 2 ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಳಕಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳು ತಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಫ್ ಪಿ ಒ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 28 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಒನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸರ್ ಇನ್ Karnataka last 1 month back we have conducted one program, we have distributed prize. One FPO turnover was 28 crores rupees per annum. FPOs 28 koti 28 crores FPO have done. That means they are no way inferior than any exporters. That we can do it. FPOಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾದರಿ ಎಫ್ ಪಿ ಒಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಚೌಧರಿ ಕೈಲಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆಯಾದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅವರಿಗೂ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂಥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಯಕ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ಲೇ? ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.
Yes.